Namaskar. Welcome to all delegates, speakers, and guardians of Ayush Samriddhi on our 335th journey. Today is National Vaccination Day, and Independent Research Society is celebrating National Vaccination Day with the concept of Ayush, that what is there in Ayush. So we have invited from Ayurveda, Dr. Hitesh Jani ji, Dr. Lakshmi ji from Gujarat, Dr. Professor Idris Ali sir from Unani Tibia College, Delhi, and Dr. Nishant Tripathi from Homeopathy. Because regarding vaccination, every pathy has different opinion. Maybe allopathy, Ayurveda, Unani, Homeopathy, or Siddha, we don't know. We have not been able to contact any Siddha expert on the vaccination. So please excuse me without Siddha today. But today we have dignitaries like Professor Madan Thangvelu sir from Jagdishwar ji, Sudhakar Reddy ji, Patankar ji, Agnihotri ji. So we are really overwhelmed and really grateful to all speakers and all audience to join us on this platform. I would like to request Dr. Jayesh that we will not enter any unwanted, any foreigner name who is not related to us, because unfortunately hacking was done yesterday also, and we had to forced to for changing the link of our Zoom webinar. Madan sir, I would like to request on Vaccination Day. Welcome, Madan Thangvelu sir from Cambridge, UK. Pavanji, pranam. Pranams to all our senior colleagues here with us. So, Pavanji, लगता है जिस दिन हम नहीं आए उस दिन hacking चल रहा. ये कैसे? Both the episode in your absence. Really, it's bad. आपसे डरते हैं सर लोग. So you are with folded hand requested to be remain all the way. दो चीज हो सकता है जी कि ये भी हो सकता है कि हमारी गुंडागर्दी है ये हैकिंग जिस दिन हम ना तो ये चलो. So welcome all our senior delegates. I'm so happy to see Mohammad Idris ji, Namaskar ji, and Jani ji from Jamnagar, Lakshmi ji from Jamnagar, and I have put in the chat box the Ayush concept, ek or vaccination though. Vaccination in our current, the last 2 years has taken a very important narrative in that jahan bhi dekho vaccination ki baat chal. And I'm saying vaccination can be understood in two ways. One is a very strict sense, sensu stricto, both narrow perspective, just say wo where you inject something, etc., and you generate a response in the body that prepares the body for a future attack of whatever. And one can also take vaccination in a broad sense, sensu lato. And that broad sense also needs to be considered. And I think this is where our Ayush systems come to great use. There is the concept of Vyadik Shamatva, which is found in all the systems. I mean, Vyadik Shamatva appears in Ayurveda, but it is there. The concept is there in Unani. The concept is there in Siddha and homeopathy too. And we have seen all of those systems being used in this ongoing COVID pandemic. From the homeopathy side, we have seen use of arsenicum album and many other homeopathic treatments that are being used as a prophylactic. From the Siddha medicine, we have seen Kabasur Kudanir, Nilavembu Kudanir, Andrographis paniculator in these formulations that are used as some kind of prophylactic system. And finally, from the Unani system, we have seen use of
a very, very important formulation, which is the archaeazib. And when we compare all of these things, archaeazib ingredients are all known to Ayurveda, Siddha, Pudina, and Ajwain, and so the ingredients are known to all the systems. I feel we should look at it from both those perspectives, a very narrow sense, which is what most people understand, and the slightly broader sense. So with those few words, I leave the floor to our esteemed speakers who have joined us. I don't know if Janiji is here with us, Pavanji. Lagta Janiji, aaya nahi ab tak. I will leave it now to all of you, Pavanji. My apologies again for not being with you today. There is a meeting in Italy, in Siena, where we are discussing on the 81st birthday of a physicist named Alan Widom. We are celebrating his 81st birthday. And Alan Widom has been a very important physicist looking at physics of water. Water is a very central thing in all aspects of life, and water is memory of water, etc., is the central aspect of homeopathy. And the physics and the mathematics and the chemistry is not completely understood. And some of the work by Alan Widom and his colleagues, Yogendra Srivastav at the university in Italy, they have all done a lot of work in this space. And so that is where I need to be in a few minutes. So my apologies again for not being here for the rest of the event, but I look forward to studying. Pavanji, namaskar. क्या चिंता मत करो, आज आपका प्रेजेंस था, इसके लिए हैकिंग वगैरह नहीं होगा। सर आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दें, फिर आप तो चले आएंगे कि जैसे आज बना रहे हैं हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो 16th का वैक्सीनेशन से कुछ जरूर जुड़ाव है, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है ना, 16th डेट ऑफ एनी मंथ, क्योंकि 16th को ही हमारा 16 जनवरी 2021 से हम लोगों ने अपना कोविड और कोवैक्सीन पर शुरुआत की थी। और इसलिए 16th आज चूंकि हो गया अपना मार्च का। और उससे महत्वपूर्ण बात थोड़ा लाइट मूड के लिए कि आज हमें पंजाब में भी आज 16th को एक नई वैक्सीन मिली है। अब वो डिपेंड करता है कितना पंजाब को आरोग्य प्रदान करेगी, कितना इम्यूनाइज कर पाएगी। It's a new vaccine to our Punjab government, so for the health of the Punjab. In that way, 16 becomes more important as far as the vaccination is concerned. So thank you. Vaccination in a very, very broad sense. Hari Om. Hari Om. Thank you, Pavanji. Namaskar. Agnihotri ji, namaskar ji. Namaskar. Jani ji is now joining us. He was in traveling somewhere in outskirts. So I would like to request our respected Professor Muhammad Idris sir from Unani Tibia College. He is head of the Department of Unani Medicine in Unani Tibia College, and he has his expert opinion on vaccination from Unani side. So I am grateful to him that within short notice he has accepted our invitation. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Thank you, Pavanji. Thank you very much. Thank you very much for organizing more than 300 episode of very popular topics in which you have shared the knowledge from all streams of Ayush, Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy, and sometimes some other allied sciences also. So, first of all, I salute to you, sir, and your organization and the person behind this show. Today's distinguished speakers, Professor Madan Thenvaluji, who just now left for Italy, and Professor Agnihotri ji, and others, and the participants
joined online. So today's topic is very important from the vaccination point of view, because we are passing through very difficult period of COVID-19. We have facing this pandemic for the last 2 years, and it's still going on. Nobody knows the future, what will happen tomorrow. But उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है कि एक ना एक दिन इससे भी हम सबको मोक्ष और प्राप्त होगा, इससे निजात मिलेगी हमें. वैक्सीन का कॉन्सेप्ट मैं कहूँ तो बहुत पुराना है. मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेट 18th सेंचुरी में एडवर्ड जेनर से शुरुआत करते हैं लोग, लेकिन यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो यूनानी में ये 19th सेंचुरी से इसको डिस्क्राइब किया गया. यूनानी की जो क्लासिकल टेक्स्ट है, और उसमें भी जो एक बहुत बड़े यूनानी फिजिशियन फिलोसफर हुए हैं ज़करिया मोहम्मद राजी, जिनको हम रेजिस कहते हैं लैटिन फॉर्म में, और उनको एज ए अल्केमिस्ट या केमिस्ट के तौर पे उनको हम सब जानते हैं. उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर. उन्होंने सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट दिया और एक बुक लिखी स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के ऊपर, दैट इज नोन एज द किताबुल जुदरी व हुस्वा, in which he has described both disease, smallpox and measles. Both are of viral origin, and moreover he was the first person to differentiate these diseases, because their differential diagnosis is very difficult. And he mentioned in that book what are the causes behind this, and clearly mentioned this disease is of infectious nature. At that time there was no concept of any microbes, not to talk of virus. So his clinical wisdom, he described these two viral diseases and mentioned their symptoms, their management, and he also mentioned his observation that when the smallpox or measles spread in a particular area or society or locality, some people are affected, but majority of people are not affected. So he called it a matter of mudafiyat or humanity, we call in modern terms. So he described in very clear words कि we first of all observe the isolation or quarantine. Quarantine is a word, though we consider it as an Italian word, but not as an Arabic word, which is which means 40 days, which was later on reduced to the 14 days. So we call it the quarantine. So he was the first person to describe the preventive aspect and management aspect. So in that way, the concept of epidemics was mentioned in Unani literature, and on his guidelines, we have taken COVID-19 as the one of the famous formulation, which was earlier mentioned by the Professor Madan Penguvalji regarding the Arke Ajeeb. Ajeeb means miraculous, wonderful. So this arc is a form of liquid, appears to be very successful
in these days, particularly COVID-19 symptoms, be it the headache or कोरिजा, नज़ला जुकाम, सर दर्द, जो भी सिम्टम थे इसमें अर्के अजीब को का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ. और सेकंड वाज he mentioned some compound formulations and some single drugs, out of which we have taken the 4 drugs in the form of Unani Yushanda or Ayush Yushanda, which has been very popular during these 2 years period. All the 4 drugs which were common among the Ayurveda, Siddha and the Unani by the name of Tulsi, what we call it the Rihan, Darchini, Kali Mirch, we call the Filfilsia, apart from the treatment of COVID-19, we are also recommended some immunity booster in single drugs like Enosporafol, cordifolia, giloy, we call it the giloy, we used in the satay giloy, in the form of satay giloy. And beside this, we have also taken the help of the vaccination, because in this precarious situation, the difference between the life and death is the vaccine. So vaccine play very important role. And now still it is going on. And on this day, we can proudly say, India has crossed 180 crores of vaccine. So majority of people, more than 80% of Indians have already been vaccinated right now. And from tomorrow, there is a talk with the ministry. They are also providing or recommending the vaccine for the age group of 10 to 14, adolescent group. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. Dr. Idris sir, am I audible to you? Your voice is not coming. We are not able to hear you, sir. Hello. Dr. Idris sir, kindly rejoin if voice is not coming. Your speaker is on, but voice is not coming. We are not able to hear you, sir. Dr. Jayesh ji,
I'm sorry for these technical glitches. I hope he is joining again. He is in the travel as we are observing the sound of various vehicles surrounding him. Kindly bear with us for 2 minutes only. He is in traveling, so he could not connect, and the connection is off and on disturbing. So I would like to request our respected guest, Dr. Hitesh Jani ji. Welcome, Hitesh Jani sir. Welcome. He was the first speaker, but unfortunately he couldn't join earlier. So welcome, Dr. Hitesh Jani ji. Now 6:28, I hope 6:30 is there. So we would like to welcome you. He is ex-principal, Gujarat Ayurveda University, and very renowned speaker. Dr. Hitesh Jani sir. Dr. Jayesh ji. Kindly bear with us for 2 minutes. I hope Dr. Hitesh Jani ji is on the system. Are we audible to you, sir? हाँ सुनाई दे रहा है पवन Welcome, जी welcome. हाँ जी जी मैं जुड़ गया हूँ लेकिन कुछ आवाज में दिक्कत हो रही है हेलो नहीं, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आवाज। वेलकम। नमस्ते 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 जी बोलिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप तो बड़े यूनिक सब्जेक्ट्स पे बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप जो बोलते हैं जी तो वेलकम वेलकम, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। ओके ठीक है, तो मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए थोड़ा मदद करिए। जरूर, यू कैन शेयर द स्क्रीन। जब डॉक्टर पवन जी ने मुझे बताया कि आपको वैक्सीनेशन डे के ऊपर बोलना है तो मैंने बोला मैं तो उसकी अगेंस्ट में बोलने वाला हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो फिर डे मनाने का तो उचित नहीं होगा, किसी का जन्मदिन है और किसी को हम गालियां दे तो वो तो हो नहीं सकता नहीं तो दोनों ही चलेंगे, दोनों ही चलेंगे। नहीं वो हो नहीं सकता। फिर भी मैं तो इम्यूनाइजेशन के यानी रोग प्रतिकारक क्षमता के तो पक्ष में सब है पूरी दुनिया, तो करते करते कहाँ फिसल गए हैं और वो कैसे वो चले गए हैं वैक्सीनेशन की ओर, वो बात तो जरूर आज के दिन में हमें बतानी ही पड़ेगी। मैं उसमें एग्री हूँ। तो नाउ कैन आई शेयर द स्क्रीन? मुझे वो आपको दिख रहा है स्क्रीन? क्योंकि मुझे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। पवन जी
जानी जी, मैं तो आपके पक्ष में हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं वही कहता हूँ ना कि भाई मैंने को होस्ट बना दिया सर आप। बस। हाँ बस अब मुझे ऑप्शन मिल गया। शायद दिखता भी होगा, अब जरा देखिए। जी जी, इट इज स्टार्टिंग। पीपीटी इज विजिबल, कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन इज, ओके ठीक है। तो बस मैं तो, अगर मेरे फेवर में सब लोग हैं तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन हम किसी को गालियां देना नहीं चाहते हैं। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का फर्क या आज के दिन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो नहीं करेंगे अगर वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन को हम अलग नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, जिस तरह से वर्ड उसमें घुस गया है। तो मुझे लगता है हमें उसमें आज के दिन ही उसको याद दिलाना चाहिए। तो पहला तो यही कि वैक्सीनेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन। अगर आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो रोग प्रतिकारकता, जिसको हम कहते हैं व्याधि क्षमत्व, तो आयुर्वेद की ओर उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की या डॉर्लेन की या मेडिकल डिक्शनरी, कोई भी ऐसा नहीं कहती क्योंकि बात करते करते वो लोग इम्यूनिटी की बात करते करते वैक्सीनेशन में चले गए हैं, जो हमारा बड़ा कंसर्न है। अगर वैक्सीन की शब्द की बात करेगी तो हमारी गाय याद करनी ही पड़ेगी। वाका जो शब्द है वो लैटिन में, ग्रीक में, हाँ, तो वाका यानी काउ। जब अंग्रेजों ने और यूरोपियन प्रजा ने भारत में, जो आप कलकत्ता से हैं, और जहाँ कलकत्ता में वैद्यराज को कविराज बोला जाता है, वो कुछ कविराजों को उन्होंने देखा 1831 में, 18 सेंचुरी मतलब 19 सेंचुरी में। तो उन्होंने देखा कि कुछ ये लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दे रहे थे। तो हम वैक्सीन के विरुद्ध में भी नहीं है, लेकिन वैक्सीन का सिद्धांत जो था तो भारत वर्षों से जानता था। तो वो देख के उन्होंने जो फिर रिपोर्ट किया, ये ब्रिटिश आर्काइव का मैं आपको फिर डॉक्यूमेंट बताऊंगा, शायद सबको भी मालूम है कि वैक्सीन तो बाद में ही उन्होंने, जिसका आविष्कार बताया जाता है कि इन्होंने ये किया है जेनर ने, एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि उनकी ही हिस्ट्री जो मेरे अभी आपको स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ, तो वो लोग भी जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन को इजिप्ट और भारत जानते थे। अब इजिप्ट कैसे जानेगा जब भारत ने जाना था? हमारा पूरा ज्ञान जो है वो इजिप्ट से होके फिर यूरोप गया, यूनान जिसको कहते हैं। तो चरक संहिता का आज से इतना हजारों साल पहले ट्रांसलेशन हुआ, तो एक साथ 20 लैंग्वेज में हुआ, उसमें एक यूनान में हुआ, यूनानी में हुआ। तो नेचुरली वो लोग जो संस्कृत लिटरेचर से जो भी सीखे हैं, जिसके बारे में हमको बताया जाता है कि वो लोग ने किया है, एक्चुअली वो नहीं है। अब मैं थोड़ा वैक्सीन की आज की बात आपके सामने जरूर रखूंगा। ये जो आप देख रहे हैं अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड चाइल्ड के अंदर क्या अंतर था, वो सीडीसी ने ये रिपोर्ट बनाया है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका ने, कि जो नॉन वैक्सीनेटेड थे या अनवैक्सीनेटेड थे, उस बच्चे से ज्यादा जो वैक्सीनेटेड थे उसमें क्रॉनिक इलनेस, एक्जिमा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऐसे बहुत सी चीज उनको आ रही थी। तो वो एक रिपोर्ट उन्होंने देखा, तो दुनिया के लोग और खास करके अमेरिका के लोग तो बहुत ताजुब हो गए कि भाई वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन अनवैक्सीनेटेड बच्चे में जो दिक्कत नहीं है वो वैक्सीनेटेड में है। तो अमेरिका के चौंक उठे, लेकिन भारत के लोगों को तो वो मालूम भी नहीं। मैं कभी कभी जब वैक्सीन की बात आती है और बच्चों के वैक्सीन की या कोई भी वैक्सीन की, तब बच्चों ने पूछे हुए बाल यक्ष प्रश्न आपको पूछता हूँ कि देखो, जब 1962 में आपने वैक्सीन का जब आविष्कार किया, या मतलब एक टोटल प्लान वैक्सीन दुनिया को आपने दिया, तो 5 वैक्सीन थे। तो आगे चलते चलते 83 में वर्ल्ड में पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आपने लगाया था 24, और आज 16 के बाद 72, और अभी तो 80 तक पहुंच गया है कोविड की वैक्सीन वगैरह आप मिलाओ तो बच्चे पूछ रहे हैं आर वैक्सीन सेफ? आज के दिन वो जानने की जरूरत है, जब उसका जन्मदिन है या वर्ल्ड उसको मना रहा है। आर वैक्सीन इफेक्टिव और आर वैक्सीन नेसेसरी? ये 3 प्रश्न का जवाब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड दे पाए, जो कन्विंसिंग हो, जो उसकी सेफ है, वो सेफ्टी के बारे में भी इतना ही बताए, एफिकेसी भी हम उसकी बराबर जानते हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट है, और फिर तो वो नेसेसिटी है कि क्या वो अपने आप खुल जाएगी? ये बाल यक्ष प्रश्न आज आप सबको हमको समझना पड़ेगा। कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स वैक्सीन के लिए, टीकाकरण के लिए WHO ने अपनी वेबसाइट में रखे थे, जब उतार लिए हैं, लेकिन
बहुत से कंट्री ने, खास करके वेस्टर्न कंट्री जिसमें भारत नहीं है, उन्होंने एक WHO को प्रश्न पूछा, और किसने पूछा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या पूछा उन्होंने बताया कि वैक्सीन का कंट्रोल और ट्रायल ग्रुप, और जिसमें प्लेसिबो को आपको देना चाहिए था वो कुछ, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसने भी वैक्सीन के लिए काम किया है जो और दूसरा उनका जो स्टडी पैटर्न है, एज, जेंडर, उसका भी डिटेल नहीं है। बच्चों में आपने वैक्सीनेशन का काम किया, बड़ों में किया, जैसे अभी भी इमरजेंसी आपने लागू करके जब दे दिया कोविड का वैक्सीन, तो आपके पास बच्चों का, पहले तो एनिमल का भी नहीं था, बच्चों का डाटा नहीं, प्रेग्नेंट लेडी का नहीं, उसका नहीं, और आज 12 से 14 साल के बच्चों को भी आप देना चाहते हैं, तो आपके पास कोई डाटा है कि बच्चों को वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी वैक्सीन के बारे में आपने, बच्चों की वैक्सीन के बारे में या कोई भी वैक्सीन के बारे में जब आपने रिसर्च किया है, तो उसका डाटा नहीं है। उसके उपरांत वो सब सेफ्टी स्टैंडर्ड सब उसमें फॉलो नहीं किया गया है, और वो सब फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड जितने भी वैक्सीन है, वो कोई वैक्सीन WHO ने उसका रिसर्च नहीं करवाया फार्मा कंपनी ने, WHO ने उसको एंडोर्स किया है। हाँ, और भारत और दुनिया भर में जानते हैं, हर इंडिविजुअल बॉडी के लिए आप एक ही, और फिर कहते हैं कि वेरिएंट अलग है इसलिए वैक्सीन अलग होगा या ज्यादा बूस्टर डोज देना पड़ेगा। तो आपकी हर बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो हितेश भाई जानी या आयुर्वेद का आचार्य नहीं कह रहा है, वो कहते हैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, हंगरी, बल्गेरिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और यूके, ये इतने देश के या तो प्राइम मिनिस्टर ने या हेल्थ मिनिस्टर ने या वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने WHO को प्रश्न पूछा है कि जो आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसके बारे में हमको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका हमको डाउट हो रहा है। लेकिन WHO ने पहले तो ये पत्र रखा था अपनी वेबसाइट पे, लेकिन उतार लिया है। तो शिशु के हत्यारे वैक्सीन के नाम से बेनकाब हो चुके हैं। मैं थोड़ा अभी लीगल पॉइंट आपके सामने रखा हूँ। तो जो डाटा स्टडी हुआ उसमें भारत, जहाँ 200 करोड़ बच्चे हैं, अभी तो वो भी आंकड़ा बढ़ गया, तो उन बच्चों के ऊपर खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में, उड़ीसा, जो आदिवासी कहे जाने वाले जो प्रदेश है, जिले हैं, वहाँ बिना पूछे, बिना बात किए, बिना कंसर्न, ऐसे वैक्सीन की इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये भारत सरकार को आधा अधूरा बताते हुए, पेरेंट्स को आधा अधूरा बताते हुए, उन्होंने ये वैक्सीन किया था, वैक्सीनेशन का ट्रायल लिया था, जो उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अभी भारत की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ये कौन कर रहे हैं? ये बिना पूछे, बिना जाने, बिना कंसर्न लिए, बिना उसका सेफ्टी एफिकेसी देखे ना भारत में ये आप ट्रायल ले रहे हैं, तो तुम्हारा खून है। आप अमेरिका में नहीं कर रहे हो, आप वेस्टर्न कंट्री में नहीं कर रहे हो, ये भारत में और अफ्रीका में ये कर रहे हो। जब भी कोई नया वेरिएंट आएगा तो अफ्रीका से आएगा, तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं आपको। तुम करो वो अच्छी बात है, तुम करो वो लीला, और हम करें वो पाप। और वो इतना ही नहीं, ये मिस्टर बिल गेट्स जो बड़े वैक्सीन के बिजनेस के कारोबार के मुखिया है, और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, वो और उस पत्नी और उनके बच्चों के ये फोटोग्राफ्स है। और उनके पर्सनल डॉक्टर ने बताया कि जो दुनिया को वैक्सीन देने वाले 75 वैक्सीन, और भारत उस इंद्रधनुष की या इंद्रजाल की माया में जो फंस गया है, वो जो है वो अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं किया है। ये बड़ी विडंबना है। या अगर वैक्सीन अच्छा होता, सही होता, और उनके सिद्धांत सही होते हैं, 100% साइंटिफिक होता, तो वो खुद क्यों नहीं करता अपने बच्चों को? तो ये बात आपके सामने प्रश्न में है। और WHO की इस साइट पे ये पूरा लगाया गया था, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। ये $3,719 बिलियन का बिजनेस है। और कौन सी कंपनियां, खास करके बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का कितना ये बिजनेस चल रहा है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसमें कहीं भारत नहीं है। हमारी सब कहने वाली भारत बायोटेक से लेके जो है, वो सब रीपैकिंग करने वाले लोग हैं। हमारा कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, क्योंकि रिसर्च जैसी चीज ही नहीं है। वो एक फ्रॉड है या एक बड़ा डिबेट वाला विषय है, जो आज इतने समय में बता पाऊं या नहीं, या आप सब भी जानते हैं। ये 24 तक का प्रेडिक्शन है वैक्सीन के बारे में कि क्या क्या, और उसका जो ग्लोबली मार्केट है, वो आप देखिए कितना बड़ा मार्केट इसमें है, और भारत नहीं है उसमें कहीं भी। ये वेस्टर्न जो कंपनियां है, ये सब फार्मा कंपनियां स्पॉन्सर ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें कोविड भी बकात नहीं है।
ये आपके सामने कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो किस तरह से वर्ल्ड में आया, भारत में कैसे घुसाया गया, और पूरे वर्ल्ड को इसकी रिसेंट हिस्ट्री के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। मुझे तो सिर्फ एक ध्यान दिलाने के लिए कि वैक्सीन, और उन्होंने वर्ल्ड को 4 हिस्सों में बांट लिया है उन सब फार्मा कंपनियों ने, कि एशिया पैसिफिक में कौन काम करेगा, और उसमें भी इंडिया में कौन बिजनेस करेगा, हाँ, और फिर यूरोप में कौन काम करेगा, अमेरिका में कौन कौन काम करेगा, अफ्रीका में कौन काम करेगा। इतना ये बड़ा काम चल रहा है। तो ये इसमें न जाते हुए एक मैं छोटी बात आपके सामने ध्यान आकर जरूर करूंगा। ये मुस्लिम डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है इंटरनेशनल, उन्होंने एक एडवाइजरी जाहिर की है। जो आप देखिए, डॉक्टर है वो और मुस्लिम है, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। उन लोगों ने एक ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको फतवा कह सकते हो। वो कहते हैं वैक्सीन में रूइन हज को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो लोग भी मानते हैं कि ये बोवाइन सीरम है उसमें, और पिग और काऊ का वो जिलेटिन है। तो ये एक हिसाब से फतवा है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि आपको वैक्सीन लेना हो तो लीजिए, लेकिन आपकी हज कबूल नहीं की जाएगी। तो ये एक अलार्म है। वो अपने धर्म को बड़ा मानते हैं, विज्ञान को बड़ा मानते हैं, या सही क्या है, हमको भी कुछ ध्यान आकर्षित ये कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स है वो कोई, और वो सब एलोपैथी डॉक्टर्स है, कोई यूनानी डॉक्टर है ऐसा नहीं है। अभी 2 साल पहले जब एमएमआर का बहुत बड़ा आपने हैवॉक फैला दिया था और स्कूल में जबरदस्त वैक्सीन हो रहा था, तब हमारे कुछ लोगों ने कंप्लेन की और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाई कि भाई कंपलसरी वैक्सीन नहीं दे सकते। जैसे अभी आपका आ गया कि कंपलसरी वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा, अभी गुजरात गवर्नमेंट को देना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट में केस पड़ा है कि आप कंपलसरी वैक्सीन किसको क्यों करेंगे। आप बताते हैं कि वैक्सीन इज ए वॉलंटरी, आपका आरटीआई भी बता रहा है, अप्रैल 2021 में आपने बता दिया, तो भी आपने पूरे देश में इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन अलग अलग ढंग से उसका प्रचार करते हुए कंपनियों ने या सरकार ने मिलकर सब कर दिया। लेकिन आप खुद तो कहते हैं कि वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी। तो फोर्स वैक्सीन वायोलेट फंडामेंटल राइट। मेघालय हाईकोर्ट ने अभी बताया, गुजरात हाईकोर्ट में हमारे जामनगर का, मेरे सिटी का एक एयरफोर्स का ऑफिसर ने बताया कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा वैक्सीन। तो योगेंद्र कुमार फिर गया हाईकोर्ट में, वो एयरफोर्स का पायलट है, वो कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है या कोई लेमैन नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई मेरा राइट है वैक्सीन लेना कि नहीं लेना, वो तय करना मेरा राइट है। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या, गुजरात हाईकोर्ट ने उसको बैन लगाया, यानी कि उसको स्टे मिला है। तो ये बातें, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया है। तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ वैक्सीनेशन है या एसेसिनेशन है, अब क्या करना चाहते हो। वैक्सीन के जन्म के दिन मुझे गालियां देनी है ऐसा नहीं है, मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन ये डाउट हो रहा है कि आप 35 वैक्सीन से आज 72 काउंटलेस वैक्सीन के ऊपर जा रहे हो, और अभी आज आपने 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए कोविड का वैक्सीन अगर आज ही आपने डाल दिया है, तो आपके मन में क्या चल रहा है आप बताओ। मैं आपको जवाब देना पड़ेगा आज कहीं ना कहीं। तो फिर मैं तो उसका विकल्प देने वाला भारत का एक वैध हूँ, आप सब भी शायद उससे सहमत हो जाएंगे। 5000 बच्चों का डाटा मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, जो भारत का एक स्टैंडर्ड, जिसको हम वैक्सीनेशन नहीं कहते, अगर कहना है तो इम्यूनाइजेशन कहिए, तो वो सोलर राशन की चर्चा मैं करूंगा। जो विद्या भारती नामक एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो संघर्ष से विचार से प्रेरित है, और आयुर्वेद व्यासपीठ जो आयुर्वेद के वैद्यों का संगठन है, उन्होंने गुजरात में 5000 बच्चों में आज 5 साल से जो हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डोज स्टैंडर्ड सिस्टम से, उसकी हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, जो जिसको सोलर राशन कहते हैं। तो इम्यूनिटी की चर्चा ही है, जिसको हम बल या ओज हमारे शास्त्रों में कहा गया है। समस्या इम्यूनिटी की है और इम्यूनाइजेशन उसके ऊपर से आया है। हम इम्यूनिटी के कभी भी विरोधी नहीं है, इम्यूनिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो आज आपके सामने उसकी पूरी चर्चा, वैद्य लोग है कितना मुझे नहीं मालूम, वैद्य लोग है तो भी कितना हम इसको समझते हैं, इसलिए मैं ये जरूर बात कहूंगा। तो आयुर्वेद बिलीव्स इम्यूनिटी एज ए आइदर स्वास्थ्य या बल, हम स्वास्थ्य भी कहते हैं बल भी कहते हैं, लेकिन उसके 3 पार्ट हमने किया। एक है व्याधि क्षमत्व, दूसरा है व्याधि प्रतिबंधकत्व, और वो है तीसरा है व्याधि उत्पादन विरोधित्व। तो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन और एंटी सीरम, ये तीनों को हम मानते थे, तीनों का प्रयोग हम करते थे, तीनों का एरिया, तीनों का फील्ड हमको मालूम था कब कब किसकी जरूरत है। मतलब इम्यूनाइजेशन से लेके वैक्सीन तक या एंटी सीरम तक हम पूरी चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है। तो कभी हमको मत समझाना। तो इसके ऊपर हमने
हमारा जो जामनगर में गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नावेरेज हम इसको गर्भोपनिषद फाउंडेशन से, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स भी रिसर्च में है, तो वो उसके ऊपर हम काम जो कर रहे हैं, उसमें एक कंपोनेंट हमारा इम्यूनाइजेशन के फील्ड का भी रिसर्च है। तो आप जानते हैं सब, और भी स्पीकर ने बोला होगा या बोलेंगे, मैं जुड़ नहीं पा रहा था। तो एक तो आपका एंटीनेटल एरिया के समय आपका इम्यूनिटी बनती है। पोस्टनेटल एट बर्थ, जांचकर्म संस्कार में कुछ नया बल मिलता है। फिर लैक्टेशन के समय माँ के थ्रू कुछ नई इम्यूनिटी मिलती है, ज्यादा मिलती है। और लैक्टेशन प्लस फूड, जिसको हम क्षीर अन्नाद कहते हैं, उस समय भी हमको कुछ इम्यूनिटी मिलती है। और कुछ अप टू प्रीटीन यानी अन्नाद समय 12 साल या 16 साल, उसके ऊपर भी हमको कुछ लेना पड़ेगा। तो हम लोग इम्यूनिटी का लेवल पहले से ही जानते थे कि कुछ तो एंटीनेटल पीरियड में, कुछ जातकर्म यानी कि एट बर्थ एंड भी, जैसे जातकर्म संस्कार जिसको कहते हैं, वो भी एक खास प्रकार की इम्यूनिटी है। फिर माँ के दूध से जो मिलती थी इम्यूनिटी, जो आजकल बहुत उसके ऊपर बहुत बड़ी विशिष्ट समस्या हो रही है, लैक्टेशन ही बंद है या लैक्टेशन के लिए लोग राजी नहीं है, या मतलब माँ का दूध पिलाने के लिए राजी नहीं है। और जब फिर अन्न शुरू होता है तब भी कुछ प्रोसीजर्स हमारी है जो, और उसके बाद जब बिल्कुल अन्न पे रहते हैं बच्चे, तो 12 से 14 गोनोडल ग्रोथ तक हम क्या देंगे, तो जिसको हम सोनोप्राशन कहते हैं। तो ये आपका जो फीटस इज हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर, हमारा जो शरीर दिखता है ना, तो सिर्फ उसको ही वैक्सीन नहीं चाहिए, उसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए। हर प्रकार की इम्यूनिटी 5 कोषों को ठीक करे, ऐसी इम्यूनिटी चाहिए। और वो आपको मिलती है फीटल स्टेज में। तो हमारे, हम जानते हैं 6 गर्भ के विशिष्ट भाव है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिक जो गर्भ के मतलब माता गर्भ के लिए और रसज भाव है, उसमें स्वास्थ्य, हेल्दी और अनहेल्दी स्टेज का, मदर के फूड के ऊपर उसका बड़ा रोल है, जो हम इसको रसज भाव कहते हैं। और उसी तरह से सातवें भाव, वो छोटी खुद मेनार्की में थी तब का उसका फूड, उसकी पैटर्न, उसकी आदतें, उसकी रजस्वलाचर्या, और जो जब प्रेगनेंसी है तब सातवें भाव, ये दोनों बहुत फैक्टर करते हैं प्रेगनेंसी के समय। और प्रेगनेंसी के समय जो इम्यूनिटी की बात है, उसमें आहार, जिसको हम डाइट कहेंगे, हर महीने का अलग अलग डाइट है। जैसे प्रथम मास से गर्भ कलर हम जाए थे तो उसका डाइट अलग है, द्वितीय पिंड है तो अलग डाइट है, जब बोन बनते हैं तब अलग डाइट है, जब मसल्स बनते हैं तो अलग डाइट है, जब पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, षष्ठे बुद्धि, तब अलग डाइट है। तो वो पूरा डाइट के ऊपर बड़ा फैक्टर है, जो कौन से ऑर्गन, कौन सी जगह पे क्या, कौन से प्रकार की इम्यूनिटी देनी पड़ेगी। कुछ तो डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो जिसको हम शायद रक्षा कर्म कहते हैं, वो जो पंचमासी जिसको कहते हैं, सीमंतोनयन संस्कार, वो भी इम्यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ बातें गुड कंडक्ट में भी आती है। तो और उसके ऊपर आज बड़ा रिसर्च हो रहा है, शायद उसको लोग, ये डीएनए लेवल पे क्या चेंज हो रहा है, और एपिजेनेटिक्स इसके फील्ड में ये सब काम हो रहा है। तो ये लेवरूट्स एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन का, और वो उसके ऊपर बड़ा रिसर्च कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आपको वो डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, भारत तो बता ही सकता है। मैं अब व्याधि उत्पादन विरोधित्व पराप्रतिरक्षा सीरम यानी एंटी सीरम की जो बात है, जिसको कहते हैं अलर्क विस्का मर्सी सुश्रुत में एंटी रेबीज वैक्सीन, तो वैक्सीन नहीं था ऐसा नहीं है। वैक्सीन कब देना, कैसे देना, तो आपको मालूम है दत्तुर पुटपाक का प्रयोग मर्सी सुश्रुत ने बताया है। अगर पागल कुत्ता ने काटा है, हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृत्रिम हाइड्रोफोबिया डेवलप करने के लिए तो वो, इसको कहते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन या पराप्रतिरक्षा सीरम बॉडी में डेवलप करना। तो दत्तुर पुटपाक का वर्णन जो है, फिर शीत वातातप गृह यानी एसी रूम में उस बच्चे को या उस मरीज को रखना पड़ता है, और 3 दिन 7 दिन तक उसका ऑब्जर्व करते हैं। तो वो पागल कुत्ते ने काटा हो ऐसा लक्षण हम प्रोड्यूस करते थे बॉडी में, तो वही हम एंटीबॉडीज उत्पन्न करते थे। तो ये पूरी चर्चा आपके सामने है। वो जो सुवर्णप्राशन की, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जो एक स्टैंडर्ड डोज मेंटेन किया है, तो पंचमृत्तिका शोधित हॉलमार्क गोल्ड लेते हैं, गोघृतम, शर्करा, फिर ये बलाघृत, अष्टमंगल घृत और कुमकुम, इसको करके एक स्टैंडर्डाइज किया है। 5000 बच्चों में एक साथ सुवर्णप्राशन कोई एक जगह होता है, तो गुजरात में हो रहा है।
67 स्कूल है, उसका पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसका क्लिनिकल परफॉर्मेंस, उसका क्लासरूम परफॉर्मेंस, कहते हैं ना, मध्य है, बल्य है, वर्ण है, तो न सिर्फ कोई एक पोलियो के लिए काम कर रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है, फिजिकल, मेंटल, आवाज के ऊपर, उसको स्वरय भी बोला है। तो इस सबको डॉक्यूमेंट कैसे करना, क्योंकि वो आज के जमाने में ऐसा नहीं चलेगा कि महर्षि कश्यप ने बोल दिया है, चरक ने बोल दिया है। जिसको आप एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा हमारी टीम आयुर्वेद व्यासपीठ के वैद्यों की काम कर रही है। इनके जो गुण है, उनके एक एक गुण के प्री और मिडल और पोस्ट ऐसे उसके ट्रायल किए गए हैं। मैं अभी उसकी ट्रायल का छोटा सा डाटा देके, तो वो पुष्य नक्षत्र के ही दिन देना पड़ता है, क्योंकि उस दिन चंद्र और कर्क की युति होती है, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर एकाकार होता है। हाँ, पुष्य नक्षत्र का जो देवता है वो बृहस्पति देव है। तो मैं इसमें ज्यादा तो अभी नहीं जाऊंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन उसी दिन आपका स्थूल और सूक्ष्म शरीर एकाकार है। तो आपके जो मेद्य है, स्वर्य है, कुछ ऐसी चीज, तो वो ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करनी है, तो फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये बात इसलिए हम पुष्य, एवरी पुष्य नक्षत्र डेली देने वाला भी अलग अलग प्राशन है। महर्षि चरक ने तो लेह अध्याय में, सुश्रुत कश्यप ने बहुत दिए है। तो लेह यानी शिवर, सिर्फ सुवर्ण प्राशन ऐसा नहीं। सुवर्ण प्राशन बोलने से आपने कौन सा स्टैंडर्ड लिया है, कौन सा लेहम लिया है, कौन सा प्रयोग लिया है, वो तो हमने ये प्रयोग लिया है। ये पुष्य नक्षत्र के दिन जो कॉस्मोस में जो होता है ये है। तो रसादि सप्त धातु के ऊपर उसकी इम्पैक्ट होती है। ये सिर्फ कोई एक एंटीबॉडीज बना देना और सिर्फ सिरम में रहेगा ऐसा नहीं है। आपको हर धातु को, हर टिश्यू को, सात सप्त धातु यानी शरीर के एवरी टिश्यू को आपको इम्यूनाइज करना पड़ेगा, उसके सामने उसको तैयार करना पड़ेगा। तो पंचकोश के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जिसको आप टी सेल या मेमोरी सेल कहते हैं, तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा मृषय पुरुष विदु, जो महर्षि चरक ने बोला है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों को समझने वाले लोग ही अच्छा इम्यूनाइजेशन कर पाएंगे। ये फिजिकल आप सिर्फ वायरस या इस एमिक्रोन के ऊपर, ऐसे वेरिएंट के ऊपर, ये आपका नहीं चलेगा। तो क्योंकि जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो तो बहुत कम है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको ये मेमोरी को वैक्सीन के, मतलब कोई भी एंटीबॉडीज बनाना है तो कौन बनाएगा, तो आपका मेमोरी सेल ही बनाएगा। तो मेमोरी सेल कहाँ रहता है, कौन सोचता है, कहाँ बनेगा, तो वो आप सेलुलर लेवल पर भी जो सोचते हैं, तो सेलुलर मेमोरी यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो क्या करेगा, प्लानिंग, विल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जजमेंटल जो डिसीजन है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्शन, इमोशंस, क्रिएटिविटी, सेलुलर मेमोरी, ऑटोमिक बॉडी फंक्शंस, हैबिट्स, पैटर्न्स, वो जो जब भी आपके सामने कोई भी एंटीबॉडीज खड़ा करना होगा या कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा, शास्त्र मानता है ये सूक्ष्म जीव है ही, हम उसको नकारते नहीं है, लेकिन उसके सामने लड़ने वाला हमारा बॉडी का कंपोनेंट को हमको इसी वेस्टर्न फिलोसॉफी को हमको समझाने के लिए हमारा शास्त्र ज्यादा समझना पड़ेगा। गाय का घी इंटेलेक्ट में काम करता है। अब हमारा ये पबमेड जर्नल में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल है, आप देखिए, डॉक्टर निशा 3 साल तक कि घी मैद्य है कि नहीं, कैसे है। तो पीजीआई मेमोरी स्केल के ऊपर हमने ये काम किया है 47.62। और फिर बाकी 3 ग्रुप था, पंचगव्य का सादा घृत, पंचगव्य का घृत और बाकी मेडिसिनल घृत। और पहले हमने एक जो 90 बच्चों का एक डाटा हमने शुरू में जो पायलट स्टडी लिया, देखो 1 साल तक बच्चे को हर पुष्य नक्षत्र को दिन वैक्सीन देते रहे। और उसका आप देखिए कि टोटल चिल्ड्रन जो थे उसमें 86 बच्चों में 5 को क्वार्टरली हॉस्पिटल विजिट लेनी पड़ी और 6 को हाफ ईयरली विजिट लेनी पड़ी। लेकिन 75 बच्चों को नील हॉस्पिटल या पेशेंट को, कोई मरीज को, बच्चे को दवाई नहीं देनी पड़ी। ये तो कहते हैं ना, पृष्ठभंगे बिड़ालानाम बरिणाम च शिखोद्गमे दंतोद्भेदे च बारानाम किम रोग नवसीदति। तो 1 साल में तो दांत भी आते हैं, लेकिन नो विजिट, ये पूरा पायलट स्टडी के बाद, और सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सीटिंग, टीथिंग, ये सब क्राइटेरिया के समय जो कोई भी नॉर्मल प्रोग्रेस हुआ। तो अभी हमने ये लास्ट में बताने वाला हूँ, तीसरी लहर का जब बहुत हवा खड़ा कर दिया और आपके नीति आयोग ने बताया कि अब तो ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो हमने बोला तीसरी लहर हो या तीसरा युद्ध। लेकिन हमने जो 5000 बच्चों में
इम्यूनाइजेशन किया था, स्वर्ण दिया था, उन सबको हमने एक इस कोविड के समय 65 शिशु मंदिर, 5000 बच्चों, 5 साल का निरीक्षण, 5 विभाग में हमने कार्य विभाजन किया। प्रांतों के प्रमुख संयोजक जो मार्गदर्शन देने वाले और विभाग के संयोजक, ऐसे पूरी एक सिस्टम बनाई है। और हर महीने विद्या भारती का स्कूल का वो कक्षा का आचार्य सूर्यप्राशन कराता है। बनाने वाली कंपनी की भी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो आयुर्वेद व्यासपीठ के जो वैद्य है, एक तो प्रदेश के प्रधान वैद्य, विभागों के भी इसके इंचार्ज वैद्य, वर्ष में एक बार हर बच्चे का वैद्यकीय परीक्षण का प्रयास। और अभी कोविड के समय गूगल फॉर्म से 5000 पेरेंट्स को ये भेजा गया था। हर 3 महीने वैद्यकीय परीक्षण तो होता ही है, लेकिन अभी गूगल फॉर्म से हमने इसलिए किया कि कोविड के समय भी क्या चल रहा है वो देखने के लिए। तो हमने उसको पूछा था कि आफ्टर सुवर्णप्राशन डिड योर चाइल्ड बेनिफिट, आपको कुछ लग रहा है कि फायदा हो रहा है? तो 1381 रिस्पॉन्स, कुल हमको 1800 रिस्पॉन्स आया था, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया, लेकिन ये भी एक बड़ा फिगर है। तो बोलते कि हाँ, हमको 94% ने बोला कि हमको फायदा है। हमने पूछा कोई दुष्प्रभाव हुआ? उल्टा प्रश्न भी हमने उस गूगल फॉर्म में पूछा कि आपको कोई दिक्कत भी हुई? तो बताया कि हमको दिक्कत नहीं हुई। ऐसे 98% पेरेंट्स ने बताया कि कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। आपका इम्यूनाइजेशन या बाकी जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि हम दोनों ग्रुप, 3 ग्रुप बनाए, इसको एक को तो दोनों होता है, एक को सिर्फ आयुर्वेदिक वैक्सीन होता है, एक को कुछ नहीं होता है। ऐसे झोपड़पट्टी के बच्चों का हम डाटा ले रहे हैं एक ही जगह पे। तो 74% बच्चों ने तो दोनों वैक्सीन लिया है, लेकिन 25 बच्चे तो ऐसे जो हमारे ही गर्भ संस्कार से कोई भी वैक्सीन, ना तो माता ने लिया प्रेगनेंसी के दौरान और ना जन्म के बाद। ये 5 साल का डाटा है। लगभग 26% बच्चों ने कोई वैक्सीन नहीं लिया 5000 बच्चों में से। और जो फिगर है 1381 बच्चों के 25% आप देखिए। फिर उसको पूछा इन लास्ट 1 ईयर हाउ मेनी टाइम्स योर चाइल्ड फेल इल। इस साल में, जब ये कोविड का संक्रमण के समय 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार या बीमारी नहीं हुआ, तो 44% बच्चे तो बीमारी नहीं हुए, सिंपल बुखार भी नहीं आया, कोविड का तो सवाल ही नहीं है। तो ये 1 बार कितने बीमार हुए, 3 बार कितने हुए, आप देख लीजिए। बार बीमार होने वाले की संख्या बिल्कुल निग्लिजिबल है। और स्वर्ण के बाद आपके बच्ची को कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, देख लीजिए 95.7%। ये 5 साल का डाटा है। 1381 रिस्पॉन्स कहते हैं कि 96% बच्चे को कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है। तो ये बहुत छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और स्वर्ण दिया ऐसे किसी बच्चों को कोविड हुआ, 96.7% को नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ। कोविड के सेकंड फेज में ये बड़े जब डर रहे थे उस समय ये पूछा गया उस समय। और इसके घरों में क्या परिवार में किसी को कोविड हुआ था? हाँ, जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जिसको कोविड हुआ था, ऐसे घरों में ये बच्चों को वैक्सीन ये कोविड नहीं हुआ था। तो फिर और भी पूछा गया कि क्या स्वर्ण से शारीरिक और मानसिक विकास में भी वृद्धि हुई? हालांकि हमारे पास क्लासरूम परफॉर्मेंस के डाटा है, लेकिन थम सकिंग या चिड़चिड़ापन, बच्चे का जिद वाला पोर्शन, जो माता को हम पूछते थे, पिता को भी हम पूछते हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। तो 97% बच्चों को वे दोनों में फायदा है, ऐसा बता रहे हैं। तो एक ही स्टैंडर्ड का एक स्वर्ण पूरे गुजरात में 5000 बच्चों में ये किया जा रहा है। ये इम्यूनाइजेशन है बड़ों के लिए। अब जब पूछ रहे हैं सब कि भाई तो फिर एडल्ट के लिए क्या है, तो वही बात को एक बड़ा डोज बनाते हुए स्वर्ण लेयम नामक एक हमने ये बनाया है। ये GMP और FSSAI अप्रूव्ड ये पूरा है ये फॉर्मूला जो है, जिसका उद्घाटन महर्षि बाबा रामदेव ने हमारे लैब का उद्घाटन किया। ये पूरा रिसर्च बेस्ड है। कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली जो एक बड़ी कंपनी है जो महिलाओं की है, उन्होंने किया। ये हमारी जो लैब है इनका पूज्य बाबा रामदेव ने इनॉग्रेशन किया है। ये पूरा 9 राष्ट्रों में आज ये हम स्वर्ण नामक इम्यूनाइजेशन करते हैं। गुजरात में 70 शिशु मंदिरों में ये हो रहा है। हालांकि फिगर्स हमारे पास 50 शिशु मंदिर के हैं। देखो, गुजरात सरकार की 2 आंगनवाड़ी भी इस ट्रायल बेस में हमारे साथ जुड़ी है, जिसमें गवर्नमेंट एमओ उसको देखता है। आंगनवाड़ी जो गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट गुजरात ऑफ सरकार, इस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसको देख रही है।
टोटल कुल 13,000 बच्चों में एक ही प्रकार का दिया जा रहा है। अगर आप इस मूवमेंट में जुड़ जाओ, 1 लाख बच्चों का डाटा अगर हम दुनिया को दे पाए तो बता सकते हैं कि ये नेशनल प्रोग्राम ये है, आपका क्या नेशनल प्रोग्राम होगा। तो मेरी आप सबको गुजारिश है कि ये आज वैक्सीनेशन डे के दिन आप इम्यूनाइजेशन को याद करो और भारतीय व्यवस्था में, भारतीय विज्ञान में, आयुर्वेद में जो दमखम है उसको बताओ, क्योंकि हमको ग्लोबल सिटीजन देना है। एतद् देशस्य प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्या सर्वमानवा। फिजिकल फिट होना है, फिजियोलॉजिकल HB और जो प्रेगनेंसी के बाद का हमारा क्राइटेरिया जो है उत्तम गर्भ संस्कार का, और इम्यूनोलॉजिकल और ओवरऑल ग्लोबल सिटीजन हम तैयार करते हैं। जो भारतीय गर्भ संस्कार और जो पूरी वैक्सीन की जो बात है उसको हम नहीं मानते, हम जरूर मानते हैं इम्यूनाइजेशन को। इसके लिए आपको मैंने जो बताया, बालो ही बलम राष्ट्र से, अगर आने वाली पीढ़ी आपकी मजबूत होगी तो आपको जरूर उसमें कुछ मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सामने ये बताने का। आप कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे जो समय दिया गया था उसमें मैंने कोशिश की है आपके साथ पूरा करने की। धन्यवाद पवन जी और सब श्रोतागण का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योर प्रेजेंटेशंस आर ऑलवेज आई ओपनर, ऑलवेज आई ओपनर। जब भी आपको सुना है एक नया यूनिक ही कंसेप्ट आपसे मिलता है। मदन सर। नमस्ते जानी सर। नमस्ते बहन जी। ये तो हमारी डायरेक्टर है। अरे नहीं सर, अरे सर आपका ही स्टूडेंट है। जो भी है, नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रही हो, बहुत आगे बढ़ो। आपके आशीर्वाद रहे। जी जी जानी जी नमस्कार जी। जी नमस्ते मदन जी। ओह, बहुत देर बाद फिर से मिले, अच्छा नहीं लगा। सुन रहे थे सारा कुछ। जानी जी, ये जो आपकी वो सेकंड पार्ट जो स्वर्ण प्रश्न की जो चीज आपने जो दिखा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारी इसमें प्लेटफॉर्म में चर्चा चल रहा कि जो स्वर्ण जो भस्म जो यूज करते हो आप, जी, उसकी थोड़ा बताना जी। शायद हमारे साथ है टोरंटो से है जी वर्मा जी। सवाल ये है कि स्वर्ण जो यूज होती है उसमें आर्सेनिक की कुछ है, कुछ कॉम्पोजिशन है या कैसे, थोड़ा डिटेल बताना जी, उसको कैसे बनाते हो। जरूर बताओ। हमारे यहाँ 13 थीसिस हुए। ये मैडम है ना इतरा की, हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट बन गई IPGTR में। तो एक नहीं 13, एक तो सुवर्ण भस्म के ऊपर, नाग भस्म के ऊपर तो सेंट्रल का था। कोई भी जो भस्म है पहले तो वो समझ ली कि वो नैनो पार्टिकल नहीं, पिको पार्टिकल बनता है। तो टाइट जंक्शन जो सेल का है उसको तोड़ के अंदर जाता है। ये 50 साल पुरानी आर्ग्यूमेंट है। मैं वर्मा जी को नहीं जानता, मैं आपको भी बस दूसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन ये 50 साल पुरानी एलोपैथी के डॉक्टर्स की या वेस्टर्न वर्ल्ड की ये थियोरी है, फिलोसॉफी है या नकारात्मक सोच है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम जो है ना हैदराबाद की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल क्या बोलते केमिकल टेक्नोलॉजी, वहां उसका काम हो चुका है नाग भस्म के ऊपर। और कहीं भी अब वो भस्मों को ये बोलना कि ये पिको पार्टिकल होता है, पिको पार्टिकल आपकी कोई मेडिसिन का नहीं होता। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी कि ये किडनी को या हैवी मेटल है। हैवी मेटल आपके पानी में आ सकता है, आपके फूड में आ सकता है, सब में आता है, लेकिन हैवी मेटल भस्म में, हाँ भस्म अच्छे ढंग से तैयार नहीं की, वो वारितर नहीं है, वो उनके स्टैंडर्ड से नहीं है, तो आपके अनाज में भी हैवी मेटल आता है। तो वो 50 साल पुराने आर्ग्यूमेंट को हम नहीं मानते। मैं मेरी भी बताऊं, ये पंचमूर्ति का एक तो हॉलमार्क गोल्ड लेते हैं, जो आपको मैंने बताया स्क्रीन पे, हॉलमार्क गोल्ड यानी गोल्ड के हिसाब से तो वो सही है। अब रही बात वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सेल में क्या इम्पैक्ट करेगा, तो उसको पंचमूर्ति का शोधित सुवर्ण प्रोसेस है, उससे करते हैं। ऐसे सिंपल वो नहीं होता, सिर्फ भस्म नहीं होती, क्योंकि भस्म में भी आपके डाउट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां बनाती है ऐसी भस्म, लो स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। तो आर्ग्यूमेंट अपने जगह पे सही है, लेकिन GMP और FSSAI अप्रूव तब आपका मिलता है कि जब आपका स्टैंडर्ड पे आप उतरते हैं। तो आई थिंक इट इज इनफ। थैंक यू जी, थैंक यू। आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड मेनी पॉइंट्स। इसमें शायद पीपल कैन कम बैक टू यू। पवन जी एक सवाल और पूछें डॉक्टर साहब से, एक और छोटी सी जी, जिसमें ये आपने जो दिखाया जी, ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हैव टू बी इन्वॉल्व, वो एक स्लाइड था आपके, वो उसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोविड में हमें आजकल ये पता चल रहा है कि
IgA की भी जो nasal entry point में immunoglobulin A अगर नहीं हो, then it increases susceptibility. अच्छा, दूसरी चीज थी जठराग्नि के बारे में, थोड़ा वो वहाँ पे शाहजक्रीमी जो होती है, जो we can approximately say gut microflora, हाँ जी, उसके ऊपर भी हो सकता है थोड़ा काफी कुछ. So I am very delighted जी कि आपके 5,000 बच्चों की स्टडी, I think we will discuss this. हमारे यहाँ है जी एक मीटिंग है यूरोपियन इंटीग्रेटिव मेडिसिन वालों की, एक मीटिंग है हमारी, तो उसमें I will point out this study कि इम्यूनाइजेशन. और मुझे आप ईमेल आईडी भेजिए आपका, तो मैं ये पूरा स्टडी का आपको एक लिंक भेज दूंगा, तो आप जरा उसको और डिटेल. ये तो अभी क्या है, समय के पाबंदी की वजह से मैं, थैंक यू, तो आपको जरूर बताएंगे. अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपके लिए. थैंक यू जी, वेरी वेरी एक्साइटिंग. नमस्कार जी, नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you, Jani ji. Thank you, Madan sir. Now I would like to request Dr. Lakshmi Priya Dai, my sister, my classmate in Jamnagar, and now director, head of the department. She a renowned personality on Prasuti Tantra, Stri Rog, Bal Rog. I welcome Dr. Lakshmi Priya Dai from ITRA, Jamnagar. Namaste. Hari Om. Excuse me, I am not director. I am only HOD and professor in Prasuti and Stri Rog. So, Pavanji, I am very proud that Pavan Sharma was my classmate, and he is always dealing me just like elder brother, and always he has advised me and helped me a lot and encouraged me during my study period. And till now also he is with me always, and I think his blessings and his advice, everything is with me. Anytime I want his help, I need his help, always he is means in two-handed, both hand he is helping. So thank you so much. So for my progress, there is a great contribution of Pavan Sharma and Nina Mehta also. So I am very much heartily thankful to them. And so am I audible and my slides are visible or not? I don't know. My slides are visible, sir? Sir? Screen share. नहीं मैम, आया नहीं लक्ष्मी जी, आया नहीं अभी तक. शायद पवन जी will give you. हाँ, आ गया. Now it is visible? Almost आ गया जी. Thank you. आ गया जी आपका स्लाइड. आवाज तो कट गया. आ गया जी सारा कुछ. Okay. Thank you. Thank you. So, Om Sri Jagannathaya Namaha. So, I think everybody is now discussed about this sitting, and because now the webinars are just like mushroom in all over India, not all over India, and all over the world, I think. So, I will not take any formality. So, take the blessings of Lord Jagannath and Lord Dhanvantari, Gurave Namaha. So respected, our Madan Thangalvelu, then Kamlesh Kumar Dwivedi sir, Ajay Arne, and our main the center point is Pavan Sharma sir. Then my senior and just indirectly Guru, Dr. Professor Hitesh Jani sir. Then Stinda Andaran and Sudhakar Reddy and all other the participants. I think participants in this session is very few. Because of this afternoon session, I think after the office hours and classes, all are taking the rest, I think. No way. But really, what Jani sir has mentioned, really it is very, very informative. And I have attended his this Veda Garbha, the scientific session I have attended, and really he's very dedicatedly is working with and the team also. So really it is a very
means I think that it is a very noble work, and I think he himself a noble soul. So that's why he's doing a noble work and giving very good contribution, not only for the Ayurveda, but for total the Ayurvedic science, and for the growing of this science also, and mainly the Prasuti and Stri Rog department, because is doing what are the research work that is the giving some support, and that is the supportive food for the for us. I think that is the supplementation. So for that purpose, I am very much thankful to sir. So let us start our, that is Ayush concept of vaccination. I think 70%, that is the Hitesh Jani sir, already he has discussed about it, and so only 30 to 20% I will discuss. So though it is a Ayush, that is the Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and homeopathy, but being a person of the Ayurveda, so I will tell about the Ayurvedic concept of vaccination. So if you see, that is the vaccination, the main aim and objective is the immunization. So for a particular disease or particular bacteria or virus, that it is the doing the work. So everybody know that I will not repeat again. That is once again, that is the active immunization and the passive immunization. And it is the artificially acquired passive immunization and artificially acquired the active immunization also. So this is the, but still then it has some limitations of this vaccination. When there is the disease is foodborne, malnutrition, sex and sleep, so these are the affecting, and there are known and unknown side effects of the complications. There are problems of resistant bacteria problem, difficulties and gaps in its implementation, then changing the theories and practice of the modern medicine also. So questions about the safety and the efficacy of the vaccine are still the subject is ongoing research by the modern medicine. So we everybody know that is how this thalidomide, it is create a terror, and it is creating the phocomalia. So that's why the some implementation of the drugs and some vaccines then also withdraw. I think in this COVID-19, that is the everybody is interested for the vaccine, but what sir told that Jani sir, that is very nicely he has mentioned, because in every, so it is need not only the vaccine, but it is need that how we increase our immunity or the body stamina or body khamata, how can we increase to promote, so that we can prevent from the diseases. So this, so that's why the means the changing of the view or the of the aim and objective of Charak and Susruta. If we see that the Susruta is telling always the Badhi Upasrustanam Vyadhi Parimukhya Swasthasya Rakshanam cha. That is the management of the disease condition and then the prevention of the disease. But if we go through the Charaka, then he is always telling that is the Swasthasya Swastharakshanam Aturasya Vikara Prasamnam cha. So first the priority is prevention is better than cure. It is Ayurveda is always telling that is prevention, promotion and curation. So 3 M's are there. And if you see the about the immunity is defined as the balanced state of the organisms that is having the adequate biological defense to fight the infection and the diseases or other biological, that is the invention, having the adequate tolerance to avoid the allergy and autoimmune diseases. So under this immunity, that is Vadhikamata, Bala, Oja, Agni, all will be included. So if you see that is the Vadhikamata, that is the, it is already been discussed by our learned
Jani sir, that is the Vyadhi Khamata, that means the Vyadhi Bala Virodhitam. Vyadhi Bala Virodhitam. That is it will reduce, that is the power or the stamina or the strength of the disease, so that our body can fight against it and then make us the healthy. And then the Vyadhi Utpadana Pratibandhakatam. Vyadhi Utpadana Pratibandhakatam. That is, which are the causative factors that are the creating the diseases, it will prevent it and then protest it, so that the disease will not be developed. So biological defensive power of the body to fight against the ongoing affliction of the disease, that is called as the Vyadhi Bala Virodhitam. And to prevent the future development of the disease, that is the Vyadhi Utpadaka Pratibandhakatvam, which can prevent the upcoming diseases. Then Bala, it is the invariable for the strength, body, mind, and it's the components. So Vyadhi Khamata, that means and the immunity versus the kapha. So Prakrita tu balam sesma vikruta mala uchyate. And such eva ojah smruta kaya such papno upadisyate. That is the natural slesma or the kapha in the body is also it is nothing but it is the immunity, and the natural state it promotes the immunity in form of the ojah. So then ojah versus the bala. So oja, it is the essence of the seven dhatu, that is the sadinam sukantanam dhatunam jat param tejata to khalu ojaha tadeva balam iti uchyate swasastri siddhyata. That is the final end product of the or the essence of the seven dhatus. It is called the oja, and it is the immunity. So that's why that is the ojasara purusa. And all the saptadhatu, rasasara, raktasara. So in this way, there is the ojasara, that means that the person is highly immunized with the natural immunity to prevent the diseases. So what is this is the types of this bala or the immunity, that is the sahaja or hereditary, or which our body itself it contain. This is the sahaja immunity, that is comes from the father and the mother, or this sukra sonita, and that is the matu ahar vihara. So it is the mainly it comes, that is the sahaja or inheritary, and it comes from the since the birth in our body. Then the kalaja, that is the seasonal. We know that is in the winter, that is there are less patients we are attending the hospital. So there is the less diseases in winter. But if you see that is in summer and in this Varsha Rutu, that the diseases are more. And so this is and again the Rutu Sandhi Kala. Always we see that is this coronavirus in this Rutu Sandhi Kala, always from 2022 till now, it is the mainly it is the spreading period, and a maximum the patients are increasing in this Rutu Sandhi. So that's why it has been mentioned in our Ayurveda, that is the sadya prana harani yesat, that is the 6 factors which causes the sadya prana hara. So one of these, that is the prabhate maithuna nidra, sadya prana harani yesat, and so that is the kumari, this atapa, or this is the asada, when there is no any cloud in sky. At that time, if there is a direct sun ray, if you do the work in direct sun ray, it will also, and apakka dadhi, then bruddhastri, and prabhate maithunam nidra. So the prabhate, but if you see now the lifestyle, how it is the changes, the modern lifestyle, sedentary lifestyle, and no very few persons
even 20% or the 10% we can get. The person, those are the early to rise and early to bed. So now everybody, it is just a proverb, and we are studying, and how much we are maintaining, and that we can see, and those are following these rules, code and conduct, how they are healthy and they are fit. So this is the Kalaj once again, that is a Balya, then Madhyama, or this say Juvavastha, and then Praudhavastha, so Vrudhavastha. So in these also, this is the mainly this always we are see that Balena Nuna iti Bala, that is the body strength is very, or the immunity is less, and in the young age, that is the body immunity is very strong. So that's why हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अग्नि इतना उनका रहता है कि पत्थर खाने से भी वो पानी कर देते हैं, कुछ भी खाए, जितना भी विरुद्ध आहार हो यंग एज में ये खा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये एज में और मिडिल एज ग्रुप is the main age group. So purve vayasi madhyava, this is the rasayan sevan, it is the mentioned by our Ayurveda. So if you do any defective lifestyle in the middle period, then it will affect the jaravastha or the vardhakyavastha. And so that's why that is the premature aging and premature, that is graying of the hair, and all the features are coming nowadays. And then Jukti Kruta, that is the acquired, it is the Bala, which when the 3D, by the 3D, that is the diet, drug, that is the rasayana, and a discipline or the lifestyle. From this we can acquire this Jukti Kruta Bala. So the concept of Bala that we know from the Ayurveda, that is during this conception, that is the Sukra Sonita Sanjoge Jodosa Bhavete Utkataha Prakruti Jayate Tena. And this Prakriti is very, very essential for this, for the immunity, because that is the Jodasa Bhavet Utkata. If the Vata dosa is more predominant, then that baby which will born in the future, he or she will suffer from the Vatic disorders and Vatadyaha Sadatura. So repeatedly he can suffer from the diseases. Once again, that is the, if that is the Pitta Prakriti. So then Pitta Prakriti, if it is the predominant Pitta dosa, then the born child may be the Pitta Prakriti predominant, and due to this Pitta Prakriti, she or he may be maximum suffer from the Rakta Pradosa Vikara. And then because that is the Raktantargata Pitta and Pittantargata Agni. So this is the Agni Dushtijanya Vyadhi. It will be maximum he or she may be suffer, and then if then it will be disease will be less. And you know that is the now maximum we are getting, what are the Prakriti Pariksha, which is a software is developed by the CCRS, that we are getting maximum the volunteers are Vata predominant persons. So due to this, you see that is the just very short temper, and just they are doing like this, जैसे बोलते हैं ना कि चुगली चपटी ज्यादा ये करके ये, और जेलसीनेस, ये सब बात का ही प्रभाव है, उनका दोष नहीं है, वो दोष तो दोष का ही है. तो दूसरा है कि हम कालज का ही बता दिया कि ऋतु एक है और वयकृत काल है, और तीसरा भी बता दिया. तो हम अभी देखें कि इम्यूनिटी एंड ओजो. Ojo has been described to exist the different form of the body, and the fraction of the ojo that circulate that all over the body through the cardiovascular system moves along with ras dhatu. This is called rasatmaka oja, the essence of the ras dhatu. Then another form of the oja is present in all the tissues, and it is called as the dhatu teja rupa. So paraja, uparaja, what we know, that is the, and this indicates the immunomechanism present in the tissue level. So what about this vaccination? So direct vaccination is mentioned in Ayurveda, but under this umbrella, under the heading of the sanskara, that there is the vaccinated, the naturally vaccinated our body and mind. So that is the Sodasa Sanskara, that is
First is the Garbhadhana Sanskara. Then in this Garbhadhana Sanskara, that now the modern people, they are following this preconceptional care. So in this period, what is happening, that is there is the how we can get this healthy sperm and a healthy ovum, and there is the healthy uterus or the reproductive organs, so that there will be healthy conception, and there will be no any diseases will form during this period. So healthy conception can occur, and we can avoid the genetic disorders. So we can prevent the genetic disorders by doing this preconceptional care or the Garbhadhana Sanskara. In this period, this Garbhadhana Sanskar period, that is the mentally, physically, and spiritually, we feed both the parents, so that a noble soul can come as the future. Then after the conception, there is the Punsavan Sanskara. Always now this is the PNDT Act is telling that it is the ban of the Punsavan Sanskara. But Punsavan Sanskara is not like that, that is for the that the Purusa or the male fetus. But Purusascha, just like the Kumarascha, Kumarischa, Kumaro. So in this way, that is the both this male and female, that is the Punsavan Sanskar is there. It is mainly meant for, that is the Garbha Sthapana and the Garbha Bruddhi. That is, it will be prevent the abortion. That is the 80% abortions are occurring during this embryonic phase. So to prevent this, so that is the Punsavan for the Garbha Sthapanartha. And then after this say Punsavana Sanskara, or up to this say 7 months, so there is the Sarvanga Vayava Sampurna. Then Simantanayana Sanskara, it is occurring generally in the pregnant lady in the 7th month. And in this Simantanayana Sanskara, all the relatives, they have given the various types of the food and the healthy foods. So what is the lacuna with the mother, or all the at that time, or nowadays also every person can't be provided every type of food to the pregnant lady. But in 7th month, when all the people, they are coming with their various recipes, so what is the lacuna, what is the deficiency with the mother? So in this, throughout this 7 month, when the baby is totally Sarvanga Vayava Sampurna, whole body has been formed. So if it will also create the immunize, that is the baby, and give the nutrition to the mother also. Then after this 7 months, then when there is the baby is birth, so there is the Jatakarma Sanskara, which has been already told by our Honorable Jani sir, that is the Jatakarma Sanskara, that is Suvarna Prasana, with enchanting some mantras. So this enchanting the mantras, it is a vibrate, and this vibration, it is positively gives some positive impact, and it is sensitize the immunosystem of the sensory system of the fetus, newborn, so that it can also stimulate the brain, and which can give the positive impulse and some vibration. It will create some sensitization, so that that immunity may be increased. And then in the 10th and 10th day, there is the naming or the Namakarana Sanskara. Then after the 3 months, there is the Niskramana Sanskara, that is the coming to outside. Then 6 months, there is the Arnaprasana Sanskara, or the weaning of the baby in 6 months. That is because only the breast milk can fulfill the growth and development of the baby, so that there will be the Arnaprasana Sanskara. And in this case, the Arna, that is the mainly that is the red rice, along with some Sandhava Lavana, and then some ghee, which is the Medhya, or the main, it is the it gives the stimulate and the immunosystem, and it itself a immunomodulator. Then Mundana Sanskara or Chudakarma Sanskara. Then Karna Vedhana Sanskara.
So in Karnavedhana Sanskara, it is act just like the vaccination. That some diseases like hydrocele, hernia, and then asthma, it can prevent by this Karnavedhana Sanskara. Then the Upanayana Sanskara, that is mainly it is in the Brahmin, there is the Upanayana Sanskara is occurring, that is the sacral thread in initiation ceremony is occurring. And in this, that there is the half of the marriage ceremony is occur in this Upanayana Sanskara in the Brahmin caste. Then starting then the Vedarabha Sanskara, or going to the school or the Vidya. Then the Samavartana Sanskara, after the study is over, then there will be Vivaha Sanskara, and then there will be the, after the Vivaha Sanskara, then when the family is fulfilled, and then there is the Vanaprastha Sanskara, that you have to leave this family and take renounce the family responsibilities. Then complete renunciation Sanskara, that is the Sannyas Karma, and then the death, that is the Antyeshti Kriya Sanskara. So all the rites having the significant impact on developing the immunity, and then, so if you see that is the three phases, that in three parts which is occurring, that is the preconceptional Garbhadhana Sanskara, then the gestational period, that is under this Garbhini Paricharya, then after the birth of the baby. So what is the impact of this Garbhini Paricharya and the preconceptional care, or we can say that is the Garbhadhana Sanskara? So that is, we have to get that is the best desirable child, not by chance but by choice. Then it may be Chira Ayusha. So longevity is more longevity. Niroga, that means there is less possibility to suffer from the disease. Buddhimanta, so it has the very talented and a memory, with good memory. Then Sukhena cha kalehe prajayate. That means from the healthy mother, you will get the healthy baby, and a timely. Also, there will no any premature delivery. We can prevent by this. So then once again, it has been very nicely mentioned by our acharyas that avoid the conception when you should be planned conception, not by chance. That whatever you are just enjoying, and the baby is coming just like in the waste product. So not like that. So avoid the conception at the time of when there is unstable oja. That is the Kyudhita, Pipasita, Attisita. So tatra Atyasita, Ati Asita, excessive taken the food. Then Kyudhita, Pipasita, and Bhita, Bimana, Soka, Artha, Krudha. So and a Puna Ichanti. So which lady don't like to copulate with this male person, and then Biguna, so if you do the conception, then there will be Garbha na dhate. So there may not be conception, or if there is conception, then Biguna Praja. Biguna Praja, that means it may be physically deformed, it may be mentally deformed, or it may be the spiritual deformed. So in this condition, it should be avoid the coitus, so that we can avoid the conception, and we can avoid a deformed baby to the society, because always everybody know that it is balam hi balam rashtrasya. So if there will be a burden to the family if a deformed baby is formed, so everybody know that it will be a burden not only to the parents, but it is to the society and to the nation also. So, and once again, it has been mentioned that to whom we have to plan, that is Ati Balam, Ati Bruddha, Dirgha Roginam, Vikara Upasrushtanam. So,
So Atibala, that is the teenage pregnancy, Atibruddha, old age, Dirgharogina, which is who is suffering from chronic diseases, and Vikarupasrushtam Varjayate. Vikarupasrushtam. That means in this condition, when there is a vikara or when there is suffering from the diseases or any type of endemic आपकी आवाज म्यूट हो गई है, काइंडली अनम्यूट. Kindly unmute. Yes. Now it is audible. Yes. Okay. Audible. So Atibala, Atibruddha, Dirgharogina, Vikarupasrushtanam. So this is COVID pandemic situation. So many couples, they are just taking the advice that, oh, we should conceive or not. But always we are advising that Vikarupasrushtanam, that it is now, it is the time of the, there is the pandemic situation, the disease is more the communicate or the upasargika now it is the spreading. So in this period, if there will be the mother will be suffer and so many cases are coming after the COVID positive, that there is the so many cases they have the IUGR cases and AFI also, there is the oligoamnios and IUGR cases are coming. So it may be there is the nutrition defect, I think. So ataha sarvadosha varjita. So when both the father and mother, though the parents are healthy, at that time they should plan for this for the child, so that the child which will born, it will be must having the immunized and a healthy baby. So then if you see, so antenatal care or the Garbhini Parchaja, which is mentioned in Ayurveda, that is in 5 phases before conception. That is for this 5 before conception, that is for the Sukrasonita Suddhi, ensure the gametogenesis and proper ovulation, prevent the congenital diseases, that is the Adi Bala Prabhuta, Janma Bala Prabhuta and Dosa Bala Prabhuta. So 3 types of disease. So among these, we can, if you do the preconceptional care or the Garbhadana Vidhi, then we can prevent the Adi Bala Prabhuta or the congenital diseases like chromosomal disorders. In phase 2 or during the conception, or then, so we should choose the season. So winter is better than summer for this conception. Then time also, in which time I have already told, that is which is the perfect the time, that is the night, and what is the exact time, and the dietary principle, that is for the male it should be Sukravardhaka, that is the Dugdha, Ghruta, etc. it should take, and a Pittalehi, that is the Agni or Agni Vardhaka, that is should be taken by the mother, and some code and conducts of the pre and a post coital period, then various postures of the coitus, then the male and for the male and for the female. So after the conception to till the delivery, general and specific, the Garbhini Paricharya, the general Garbhini Paricharya and the month-wise Garbhini Paricharya in 3 different phases should be taken. Then the lady I have already discussed that in preconceptional care, the mainly the diet for the father or the male partner is the milk fortified with the drugs, and for the female, that is the Agni drugs. Then the Punsavana Punsavana karma should be done. It has already been discussed. And so the first month to up to the 3 months, that is the before the Davrudavastha or Asanjata Sara Avastha, or when the Asthidhatu is not formed, because that is the first to 3 months, it is the Asanjata Sara. So Sanjata Sara, that means the Sthira Dhatu, that means the Asthidhatu form. So in this condition, what is the first month to the 3rd month, that is mainly it is the embryonic period, and this in this period, that is the all the drugs are contraindicated, and so that's why that it has been mentioned that milk or the, that is which is the best rasayan, the Ayurveda is telling that the milk should be taken, because in this it is the crucial period for the fetus, that when the mother is suffering from the nausea, vomiting and
she is the refusing for the food. So in this condition, that is the fetus needs or the embryo needs the best quality of the diet, not the quantity. So best quality diet, I think milk is the best qualitative diet. So that's why I think our Acharya has been told that they taken the madhura drava sita praya ahara, and mainly the milk and or the medicated milk, or we have already this doing this rasayan drugs, that is some biosthapan drugs medicated with the milk, and that milk is giving during this first trimester period. And we have 2 to 3 case study we have done in PhD and the PG study, and we have seen that with the baby is born, that is the immunity is strong. So though we have not facility for the IgG, IgM, both should be done, and then but the episode of the infection, it is reducing, and their parents are telling that he or she is the Ayurvedic baby, so that's why she is not suffering from so many diseases. So she or he is very strong and stout, and even the milestone development in mentally and physically, it is very good. And then from the 4th month to 7th month, that is mainly the Davrudha Avastha. Now the Davrudha Avastha, that is all the modern science also told. What is the need or deficiency of the baby? It is coming as a signal by the baby to the mother through this blood circulation or through the placental circulation. So that's why the Davrudha has been told, because it is the Davrudha Avastha, because the baby's heart or baby heart is connected with the mother through this signals, also through this blood circulation. So that's, and the baby is expressing, and so that's why the mother is thinking to, or mother desires to take that type of food or that type of articles, etc. So, and if the mother this condition is not satisfied, then there may be defective child may be born in the future. So if any undesired food or which is not a favor for the mother, it is desired by the mother. So with these good foods, we can give some little amount to satisfy our mental satisfaction, so that there will not be mentally diseased baby will be born. And in that you see that is the Bruhaniya Jangal Mansarasa and Hrudya. So Bruhaniya Jangal Mansarasa, it contains the organic iron, so which can fulfill the extra need of the iron, and the calcium also, that is by the milk. And then in the 7th month, it is the 7th month onwards till delivery, up to 7th month, it is the Sarvanga Vayava Sampurna Avastha. So up to 4 months, 7 months, that is the Dhatu Purata, or Ayurveda is telling that Sapta Dhatu, it is one system. Like modern, it is telling that is the respiratory system, all the systems are. But in Ayurveda, Dhatu, that is Rasa Rakta Mansa Meda, Asthi Maja, Sukra, all the Dhatu, they are the systems. They have their own channels, and so the Sarvanga Vayava Sampurna, Sarvadhatu Sampurna till the 7th month. So that's why in 7th month when the baby is born, it can live. And then after the 7th month, then in 8th month, Oja function of the Agni or unstable of the Oja. That means the immunity is not stabilized, or there is the immunity is formation of the immunity. Or if there is baby is born in this 8th month, there is chance of the suffer from the diseases is more. So always it is avoiding. And for this Oja Vardhaka diet, in the 8th month we are giving, that is the Deepaniya Snigdha Khira Javagu Mansarasa, then the Snigdha Javagu, because
in this 8 month, then baby needs mainly to store some this calcium, some irons and a protein. So in this mansarasa and this snigdha javagu, by the milk, by this mansarasa, you can get this the organic iron and then the calcium also. Then again, it is the best rasayan also. So then about I think this Panchamasi, which is using in Gujarat, already our Jani sir already been told that is the Panchamasi, means in the 5th month it has been tied over this right hand wrist portion, and the 5 drugs, it contain the 5 drugs like rusted iron, then the lead oxide, that is the sindura, and then the chatur rasta dhuli, that means the which is the open soil that it has been collected, then the udada, and then kaudi. So it is the in even a black cloth, it has been wrapped and it is the tied in the 5th month of the pregnancy, and it is removed after the delivery. I think this all the things, this it is the contaminated one. So when it will come in contact with the skin of this pregnant lady, it can prevent the this tetanus, and it can also develop so many immunities gradually, so that mother will be not suffer from any other diseases during the pregnancy period or after the during the labor also. So then after the birth, there is the Jata Karma Sanskara, which has already been told, that is the mainly Ayurveda has been told, that is the Madhu, Ghruta, and there is the Subana and the breast milk. So this, along with this, also there is the enchanting the mantras in the ear of the baby, just newborn baby, by the father. So this mantra, it has some effect, that it has due to the vibration, due to the wave, it has so many, though the study has not been done so many cases, but still then it has some effect, and I am requesting to all the institutions, they should do this enchanting this mantras to the newborn baby. And I think honey and ghee and gold, it has been given every institutions. And so in Ayurvedic, what I have seen, that whatever the even the vacuum delivery we have done, I think 500 cases we have done here, but never, no any baby has suffered from this CP child. No baby developed the CP child, and every child has its own natural growth and milestone development. I think during this period we are giving this Ayurvedic drugs and Siropichu, so that may be effective to prevent the CP child. So this Suvarna Prasana, so up to six months, that is the Kashyap has been told, if continuously it has been given to the baby, and even just if we not give, that is the so much quantity, even we are advising, that is the in form of this Kumar Kalyan Rasa, it also contain the gold bhasma, and with these 2 to 3 tablets, just it has been titurated in honey, and keep it in a just clean bottle, and just in the morning, just in a tongue of the baby, just it will be with one finger of the baby or mother, it should be linked us. So it is also giving very good results also. Then Pusya Nakshatra, also told by then so Arnaprasana Sanskar. So that is the weaning period, that is the 6th month of the baby. I have already been discussed, that is the in Kashyap Samhita, Khilasthana, very nicely it has been told, that is the weaning of the baby. And another thing that is in Kashyap Samhita or in Ayurveda is told, Ahara iti Mahavesajam. So Sansodhana Sansamana Ahara Achara. So the diet and the lifestyle, it is the 2 major factors for cure the disease and prevent the disease also. So that's why it has been given. So Rutubhuk, Mitabhuk, and Hitabhuk. So 3 type of the diet which is taken by these volunteers,
they are positively, they have prevent the diseases and they will be healthy. Then Karnavedhan Sanskar already I have been told, and then the Rasayan therapy. So Rasayan, it is the, means I think it is the just like Amruta, or it is a unique therapy by mentioned by our Ayurveda. And this I think Guduchi, which is the Amrutanang. So I think in this corona period, that is the Guduchi, everybody, I think even from modern to Ayurveda, not for all the Ayush and all the public people, they know about this effect of the Guduchi. And it is very, even is sometimes it has been that the Guduchi is just not available in so many places, that in such a need of this public demand. So this taking the Guduchi Sattva, or this 1 to 2 leaves also, Guduchi Saka also best. It has been mentioned by the Susruta also. So then Amalaki, that is Vayasthapana. So taking this either the dry or the general Amalaki, or its rasa, or any form of this Amalaki, it is the best for this. And along with, we can take also with the ghee, or with the ghee and honey also. It can be also take in the empty stomach, which is the best vaccination we can do. Then the milk, ghee and the medicated honey, medicated ghee or medicated milk and honey also. So then study is in for that, it will improve the overall health and the immunity. So other traditional immunization practices are in South India. There is one book is there, that is the Arogya Kalpadruma. In there, for the Ayurvedic practice, the Prakara Yoga, they have practicing, and the Ura Marunu or Janmaghuti, it is been given to the newborn baby and the fetus, sorry, the newborn baby and the childhood, the children, which is giving very good results and increase the immunity. Then some traditional practices at Odisha, that is the Amarapoi, for the to taken, it is the prevent the cholera or the diarrhea of the during this any type of diarrhea. Then so this is the Amarpoi, everybody know that is the it is very that is the Pathar Kudi, or from the leaf the itself the plant can be grow. So that leaf, it is very fleshy and it is available in everywhere. We are using it is as a soap plant, but it has so many, that is the medicinal value. And I have also have the experience when my son, he was suffered from this screw, from the West Bengal. At that time there was the in I think 2000 or no 1996, I think 1996 there was a screw in West Bengal, and at that time my son was contaminated and he was very in acute condition. So in that case, I have given this, though he was admitted, but still then it was a very acute condition and life was a risk. So at that time I have given this Amarpoi Patra along with this black pepper, and I think after giving 2 to 3 dose only, then he reduced the this frequency, and then he was okay after the 3 to 4 days. So then one second, that is Akanabindi or the Patha, which is a colloquial name is the Kanabindi, and the Patha, that is the, it is using in scorpion bite. By the whole the plant, it has been Kalka is or the paste has been found, and in the where the site of the scorpion, that it has been pasted, and then it is giving the, and the some swaras also it is internally also taken, and it is giving the very good result. And in case of the snake bite, when there is the antivenom is not available, in that cases, that is the Naramutram Garamanti. At that time,
they are using the in our Odisha, that is the Lakhana Mishra book, that is Ghara Vaidya. So it is every family has one book, and they are using that is before, that is the 50 years before, they are using these drugs, and they are getting the good results. So this say naramutram garamanti. So any type of poison also, even snake poison also, it is the which is the child is more than 12 years, that urine should be taken, and the first urine should be destroyed, and then the middle urine it has been taken and given to that person. And so this is even in a scorpion bite, in snake bite also, it is giving good results. Then the Arka Khira, that is the 15 to 20 drops of the Arka Khira in internally, and even Arka Khira it is used in the snake bite area, so that it is the Visagna. It itself, we know that is the Arka, it is the Vis, but it is the white Arka we should take. Then the Dronapuspi. So Dronapuspi, everybody know that is the plague, it is in Surat. It was when the very pandemic, at that time in Odisha also. So by this Dronapuspi rasa, with the black pepper, it is the when the patient is in the internally, or when if the patient is unconscious, then also giving by the nasal instillation, and it is giving good result, not only in this plague, but also in the this rat bite, but in the snake bite also. So then this Patala Garuda root with the milk for the snake bite. Then in the Pana Sankranti, that is during the Mahabhishuva Sankranti, in that day, 1 tola of the Nimbapatra and 1 tola of the Masura Dala, it should be pasted and taken by this by the person, so that it will be very prevent the snake poison. So I think in my family, always we are doing like this, and so but till now I have not faced any bite. So but still then we are because my husband is in this Koraput, and where is the place is the mainly the snakes, they have maximum the poisonous snakes. So in that place always he was taking, and even he was always forcing that to take this. So and it is the maximum use in the Odisha. So in dry cough also there is the tamarind 2 tola, or that is the 20 grams, and that is the good or the jaggery, that is mainly from the sugarcane jaggery. It is the again 20 grams, and it should be mixed with the water, and morning, then noontime and evening. 2 teaspoonful it should be given to this whooping cough, or those have the dry cough, or those have this COVID. During this COVID period, there is the continuous coughing. So within this 10 to 12 days, there is it is the curing. And besides, but not in tuberculosis case, it is not giving good result. So in case of the migraine also, by just pricking the same side, the visible vein should be pricked by a needle, and then in that, when the blood is coming, in that case, that is the Arka Khira, it should be paste, and then so that is the blood should be come in contact with this Arka Khira, so that the Arka can mix Arka can with this blood, and within 10 minutes, I have seen so many cases that there is the migraine or the headache. So in case of the, once again, the epilepsy cases, the white Arka Puspa, that is the 3 rati with this black pepper, that is 3 rati in the morning, it is should be taken for the in empty stomach for 7 days. It is positively reducing the symptoms. Then in case of the measles, so that is the badara leaf. That is, we don't think that is the Italian badar or the apple badar. It is the only which is available in a regional. That is the leaf bud. It is 8, and 1 lavanga. It should be the flower. The main flower should be detached from its, and then 1 elaichi. That is this elaichi, that is the big one,
and then with this 1 tola of the misri, then it should be pasted, and with this water it should be taken to the giving to the baby, that is spoon, and it is 1 dose, and 100 patients I have seen, and in that cases also it is giving very good result in high grade fever also, and there is the lacrimation, but it is giving very good result. I am requesting that those are just attending this webinar, they should practice it and they just communicate me. In Gujarat, in jaundice, that is the Biclo. This is the Biclo is very, very effective in case of the jaundice, in case of the hepatitis. It is very effective, and it is mainly available in the Gujarat, and this local people they are using. And when the modern doctors they are refusing, in that case also it is giving very good result. In measles and chickenpox, Nimbapatra, that is the we should sleep on that bed of the Nimbapatra, and then dhupan by the Nimbapatra. Then heaven prevent the airborne diseases. So this is the limitation of the practice, because everywhere everything is not available, and this cow milk and cow ghee, honey, all these are not available in all over the places. So lack of this clinical evidence generated in this domain remains again the major problem. And so this regional variation and a contraindication of this practice also poses challenges and population to the standardization of the same. These practices, their effectiveness and healthy promoting the immunity building measures have been extensively started, and however their role is increasing the disease specific immunity or the ability. So conventional immunization technology are yet to be proved. So the prophylaxis of the concept, that is the Nidan Parivarjana, avoid the drinking of contaminated water and air, all these things. Then the Dinacharya, that means starting, that is you are woke up from the bed to the going to the bed. So very nicely that when we have to wake up, and what type of this toothbrush we have to take, in which the plant we have to take, that is the plant stick we have to take for this, and what is the metals, even the silver or the gold, that is the tongue cleaner we should use. So it will be also creating this one of the vaccination or the prevent the disease. And then that is the kabal dharana, and then washing the face also by this amlaki decoction. It is also reducing this nilika and all the skin disorders, and then it is also giving the strength to the mouth also. Then kabal dharana by this oil filling of the mouth, and then this is massaging the oil and taking the bath by the warm water. Then it is also preventing the skin diseases and also freshness also in the mind. And then the wearing this white clothes, it is giving the peace to the mind. Then the ornaments, whether gold or silver like this, the metals. And then the flowers, that is the fragrant flowers, it is giving the mental satisfaction and a freshness to the mind. That is the Somanasa Garbhadharananam. So then the Rutucharya, that is the seasonal regimen which is mentioned. That is the Haret Basante Slasmanam Pitam Saradi Niharet Barsasu Samet Vayu Prakbikaram. So just like our vehicle, we have just giving the service in every 6 months or yearly, we are doing this servicing, or every monthly or bi-monthly. So similarly, our body needs the servicing of 2 times. That is the, so that's why there is the mention of this Navaratri, that is the 2 Navaratri. One is Chaitra Navaratri and another one is this is the Basanta Rutu, there is the Sarat Navaratri. So in this case, so Basanta Rutu, we have to do the Slesma should be reduced by the Baman Karma, and the Pitta should be reduced or should be excreted in the Sarat Rutu. And during the Barsa, there is the Visheshan of the Vayu. So the Basti should be given during this Barsa Rutu. So if the 3 things we can do, that is the Bamana, Birechana and Basti, then we can immunize our body and prevent the diseases, which is the main role of the vaccination.
then the proper food, that is the Ayurvedic, emphatically that is the says that is every human being the product of the food. Because rasajanang cha garbha rasajam purusham vidyat. So avoid the viruddha or the incompatible food, though we can prevent the disease. So viruddha ahara, that means sanjoga viruddha, then the guna viruddha, virja viruddha, and then the patra viruddha. So that also just like in copper vessels, we should not take any type of the sour things and or the cord also. So principles of prophylaxis vaccine in our day-to-day life, so it can be done. And then sodhan kriya, so kala sodhana I have already told you. And then this is the rakta mokshana. So in Sharat Rutu, if there is the rakta mokshana is done, then the 50% diseases we can prevent it. And taking the rasayan therapy, because rasayan nama vayasthapanartham medha balavarnakanam roga apaharanam samartham cha. So this is a unique contribution of the Ayurveda. It is considered similar to the chemo prophylaxis. So some rasayana, that is the nitya rasayana, which is the milk, and then agni dipana, milk and ghee, then honey. The daily you have to take. Then the agni dipana drugs. Then the prakriti and preventive foods for the diseases. If there is a vata prakriti person, it should eat the sweet, salty, sour tasting, the hot unconscious, and the smooth, like the wheat, milk, curd, jaggery, sweet, fleshy food, etc. If there is pitta prakriti, then eat the sweet, bitter, astringent, and the tasting cold, soft, heavy, unconscious foods, and a ghee, bitter gourd, then the gram flour, and then the sugar jaggery. Then if kapha prakriti, then should be taken the pungent and the bitter, astringent tasting foods. So prevention of women diseases by obeying or following some paricharya in different stages of the life, that is puberty stage, pregnant stage, postpartum, and the lactating phase, and in the jarabastha also. So for the puberty, that is the rajaswalacharya. Then during the pregnancy, there is the Garbhini Paricharya, and during this labor, that is the Prasava Paricharya, Sutika Paricharya. So it should be followed so that it is can increase the immunity and it can act as the action of the vaccination. Then some manas rogas, like we can do the sadbuddhata, and so the dharaniya vega, that is krodha, lobha, moha, irsa. So we should, that is the you have to follow. And then again the Ayurveda, the body mind, it coordinatedly prevent the manas diseases. So following this sadbhuta and code and conduct, for instance, the properly dilated body, both internally as well as externally, seldom gets the disease like the Parkinson. So it is the take home message, if you say, that is the factors influencing the immunity: place of the birth, time of birth, favorable weather, excellency of the genetic qualities, excellency of properties of food being consumed, excellency of the physique, good ability to tolerate the various factors, excellency of the mental status, favorable factors related to the nature, youthfulness, exercise, and cheerful attitude. So the Ayurvedic best vaccination tool is, or the tips for improve the immunity and prevent the disease is the pibet agni viburdhatam na cha vegan vidharayat agni diptikaran runam roganam samanam prati. So agni bruddhi is the best vaccination, and with the avoid the suppress of the vegas. So that is the best vaccination, and we can prevent the diseases. So thank you. Namaskar. Namaskar Pawan Kumar and our BK Agnihotra ji, and all the team that who has given me such a platform that to share my thoughts. Once again, and thank you and a pranam. Namaste. Thank you, Dr. Lakshmi. Thank you. Very comprehensive, very informative. Excellent, excellent. Dr. Madan sir, Agnihotri sir.
Namaskar ji. I will quickly say, Lakshmi Priya ji, your details जो आपने दिया बहुत शानदार थी. So first of all, big thank you. बहुत बढ़िया. You have given so much information and इतनी subtle चीज जो आपने उड़ीसा के बारे में जो बताया, जो आप लोग लेते हो, these are very very important things. छोटी छोटी चीज. अब इसके पीछे काफी कुछ साइंस है. अब जामनगर में आ रहा पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नया ग्लोबल सेंटर, तो हमारी तरफ से ये है कि आई होप ये जो चीज आपने जो प्रेजेंट किया, दैट विल ब्रिंग इनटू द ग्लोबल WHO सेंटर. और दूसरी चीज जी, आई होप many more such small details can be collected from all the states of India. जो आपने उड़ीसा के बारे में जो बताया, that is also, अगर साउथ की तरफ जाओ, कर्नाटका में, केरल में है जी ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो they take it before the monsoon season, कर्कटक मासम they call it, कर्कटक चिकित्सा. और दूसरी चीज जो आपने बताया, हमारे पास वो किताब भी पढ़ा है यहाँ, that is the एक मिनट जी, this is आरोग्य रक्षा कल्पद्रुमा. So this is a very important book. Yes, and yes. you have talked about this. और इसके अंदर काफी कुछ, this is a very very important book. I don't know if many students know about this. और इसमें there are many details here. बच्चों के लिए क्या कुछ करना. So I was so happy to hear all this. I thank you again for the presentation and thank you for इतनी detail जो आपने दिया. और आप लोग जानी जी है, आप है और आपके जो students भी है वहाँ. I want to see how we can connect very closely with the WHO Global Center for Traditional Medicine. So I leave it there. I leave it to Agnihotri ji. Perhaps Agnihotri ji has some comments. Thank you, Lakshmi Priya ji. We hope you will stay connected with our platform and share more information. इस टाइप का चीज और हो किताबों में, कमेंट्रियों में, टीकाओं में, तो उसको भी ले आनी है जी आगे आरोग्य कल्पद्रुमा जैसे. थैंक यू जी. शायद अग्निहोत्री जी के might have some comments because he is the Swasthavarit person. We always look to Agnihotri ji for his guidance. Thank you, sir. Thank you, sir. I think we have got one more speaker, Dr. Tripathi of homeopathy. So just 1 or 2 sentences I would like to say. Dr. Tripathi has boarded in the flight, sir. Sorry. Okay. So she is the last speaker ever. Yes. Okay. So I have got 2 things that the one is that when our principals or ex-principals are Jani were speaking, I was thinking that what left? So descriptive and so informative. I congratulate all those students who did under him MD, PhD and all that. But when Lakshmi Priya started, she didn't leave any point, any sector, anything. And in brief, with 1 sentence, I can say that India is a preventive country. Simply because we follow Ayurveda. The whole principles, the system, the dincharya, she emphasized so many things like 3D, diet, drug, discipline. She also talked about the use of this male urine. So it is also there in the reference that nar mutram rasayanam, 1 point, and again manush mutram vishapaham. So how wonderfully they caught the point that if it is vishapanam, though it is not affecting in a toxic manner inside the body, but the use of narmutram can even a part of treatment of snake bite. Really, it's eye-opening. If it is so, because when I read it is in 1975,
नर मूत्रम रसायनम और मानुष मूत्रम विषापहम. So these sectors are really not in regular touch, but if it is in practice in Jamnagar or in Odisha, definitely there might be scorpion, snakes, and other things are there. So was the case with the coastal area where person used to go, the kids used to go, and they may have some sort of small cockroaches or this octopus type small piece thing, and they can just stick over the skin. So there might be some instant remedy for the same, as here in Kapikachu and all that. So this sector, as Professor Manu sir told, that this Vrakshikalpidum type books are of great help, because this is the hidden treasure of our Ayurvedic information. Of course, they can be escalated on the basis of or on the parameters of science. So that's no problem. But you covered wonderfully the whole of the regime of a pregnant lady, and that too before pregnant, and you talked repeatedly regarding the 16 sanskaras. That is the boon of the immunity as such, apart from the going for sonoprashan and all that. So thank you very much. I think your presentation is above all, and as far as the Janisa is concerned, he narrated the things. I think it would have been better if we have called him on Annaprashan webinar day, because he touched the Annaprashan sector in a rather better and rather more informative and scientific manner. So either on Annaprashan day or on Jyotish day. These two sectors were webinars we had, and I think his gracious presence would have been given a lot of more and more information to all of our listeners, and to might have enlightened us. So thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. Over to So excuse me, just I forget to confirm that this Orca, this Khira, it is very good effective. It is act as the anti-rabic vaccine. So where this Orca Khira. Arka Khira, that is Arka Khira. It is only 8 drops of the Arka Khira. It is Arka Khira. Yeah, Arka Khira. Oh, it is wonderful for skin diseases like eczema and all that. Not only the skin disease, it is very wonderful for the. It will act as the anti-rabic vaccine where there is not available. So 8 drops of the Arka Khira they are giving with this one of the banana, that is the ripened banana, and they are just infiltrating, that is the 8 to 10 drops, and it is been giving to the patient, and it is giving only for the 7 days, and it is the no patient till now it is the having there is the phobia. So it is sir very good effect. Really, I forget to inform on scorpion bite. Not scorpion bite, in the dog bite. Dog bite. Yes. So kind of you. So many thanks to you. Thank you. Great presentation. Thank you. I need your blessings. Thank you. And I am very much thankful that you have given me such a platform to share my thoughts. Thank you so much. Yeah, you are always welcomed, and you are always invited whenever whenever we will like to have good information from you. We will call you. We will invite you. Thank you. Thank you. Before calling Dr. Harish Verma ji, I would like to communicate only one message, that tomorrow is our refreshing webinar. In refreshing webinar, we will be listening Hasya Kavi, 3 Hasya Kavi, यमदूत जी, दीवाना जी, गोपाल जी, तीनों हास्य कवि हैं, और साथ में हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास, डॉक्टर मधुरिमा भार्गव, डॉक्टर विनोद लवानिया और डॉक्टर शिव कुमार आचार्य, ये हमें अनुग्रहित करेंगे सभी लोग हास्य कविताओं से। और कल होली के उपलक्ष्य में ये आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। परसों 18 तारीख को स्लीप डे, तो उस समय प्रतिभा शाह जी यूएसए से बोलेंगी, उस दिन लंका से बोलेंगी क्या कहते हैं प्रियदर्शनी जी, विष्णु प्रिया जी बोलेंगी गोवा से, तो स्लीप डे भी है। तो वेलकम टू ऑल। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर हरीश वर्मा सर। डॉक्टर हरीश वर्मा जी। नमस्कार, प्रणाम सभी आचार्यों को प्रणाम। नमस्कार सर। मैडम
नमस्ते जी आपको स्पेशली प्रणाम। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की थी, बहुत कमाल। 2-3 प्रश्न है पवन जी। एक तो मैं आज बीच में YouTube पे सुन रहा था, तो डॉक्टर मदन जी ने डॉक्टर जानवी जी से क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग स्वर्ण प्राशम। उसमें वही पॉइंट था कि स्वर्ण भस्म कौन सा लिया जाए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्वर्ण भस्म बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में स्वर्ण भस्म को मनशील और पारद और गंधक के साथ मिला के भी उसका मारण किया जाता है। तो उसमें कई बार आर्सेनिक का टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो वो एक पॉइंट हम क्लैरिफाई करना चाहते थे। दूसरा, एक सवाल मेरा और है सभी आचार्यों से कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ण प्राशम के जो बाकी के घटक हैं, जिसमें ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वच, अश्वगंधा, गुड़ूची, मधु और घृत, यष्टि मधु, ये सब चीजें ये अपने आप में सभी इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं। क्या हम स्वर्ण भस्म के बगैर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका कोई डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल या कंपैरेटिव ट्रायल करवाई जा सकती है, जिससे हम ये देख पाए कि क्या स्वर्ण भस्म के साथ ही ये चीजें इफेक्टिव हैं या उसके बिना भी इफेक्टिव है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा, मैडम जी बैठे हैं हमारे साथ, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ इनका एक्सपीरियंस। जिन्होंने अर्कशीर की बात की कि अर्कशीर के 7-8 बूंद अगर हम देते हैं, कभी इन्होंने कोई साइड इफेक्ट उसका नोट किया कोई? क्योंकि हमें लगता है कि अर्कशीर अगर देते हैं वो बहुत ज्यादा करोसिव होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस माना भी गया है कि अर्कशीर जो है पॉइजनस होता है। उससे कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन तो नहीं नोटिस में आया इनके? वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मी जी। हाँ जी, मैं थोड़ा ये गई थी। प्लीज काइंडली रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। आपके लिए क्वेश्चन है मैडम, जो अर्कशीर की आपने बात की, आपने कहा कि बनाना में 8-10 बूंद अर्कशीर को डाल के पेशेंट को, जो रेबीज से इफेक्टेड पेशेंट थे, उनको दिया गया। हाँ जी सर, वो जो फ्रेश उसमें एज ए एंटीडोट इसने काम किया। उन पेशेंट्स को रेबीज हुआ नहीं, आपने ये बताया? नहीं सर, रैबिट्स नहीं हुआ था उसको, है ना। वो जो डॉग बाइट के बाद ही उनको एज ए प्रिवेंटिव पर्पस में दिया गया था। हाँ, एज ए एंटीडोट, यस। हाँ, उसको वैक्सीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वैक्सीन की डेफिनेशन तो अलग है। एज ए एंटीडोट दिया गया। हाइड्रोफोबिया सर उनको नहीं हुआ है। उनको ही आफ्टर द डॉग बाइट के बाद ही उनको रूरल रीजन में ऐसे 10-15 केसेस का ही सर ये करके है रिकॉर्ड्स है कि उनको दिया है, लेकिन उनको हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ है। तो उसमें कोई उनको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था अर्कशीर का? नहीं सर, वो ही मैंने बोला कि वो पक्का हुआ जो राइपन बनाना है उसको ये करके उसके अंदर ही वो जो 8 ड्रॉप्स वो अर्कखीरा, फ्रेश अर्कखीरा ही दिया है, और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और 1-2 पेशेंट को उनको थोड़ा कि लूज मोशन हुआ है और कुछ नहीं। मैडम एक चीज बताइए, जो आप बता रहे हैं कि उनको हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है कि वो जो डॉग थे वो इन्फेक्टेड थे या नहीं थे? सर वो भी हो सकता है, लेकिन सर ऐसे तो स्टडी नहीं हुआ है। वो रैबिट थे या नहीं थे? क्योंकि हम लोग लिखते हैं अगर रैबिट डॉग है तो डॉग हम लोग लिखते थे ना, वॉच द डॉग फॉर 7 days और 10 days। इफ डॉग डाइज इट मींस कंफर्म इट वाज इन्फेक्टेड। सर उसका जो है ना, जैसे हमारी कोई भी डॉग सर बाइट करता है कि जो ऐसे स्ट्रीट डॉग है, तो उसको तो सर सबको ये नहीं रखा जाता है ना, हम लोग उसको एंटी रैबिट वैक्सीन ही दे देते हैं। जी नहीं बर्बाद सर, फिर तो मान सकते हैं इन्होंने जो कहा वो एज ए प्रिवेंटिव दे दिया, क्योंकि neither she was confirmed nor much more likelihood was there. It is sir, it have to study. Because we those who are having the domestic animals, we are going 300, 400, 3,000, 4,000 rupees per year for their vaccination. So we are sure we this Labra is with me.
so no problem. But the street dog, as far as the street dogs are concerned, there is always likelihood to be get infected, and a small child, all they run. are the street dogs. Yeah, All are this is street very- dogs, sir. All are street dogs, sir. But there is so it is the sir research. I have given this information to this platform that everybody should be aware about it, and they should do the research work so that it can be proved in near future. And now the veterinarians have given new word, not street dogs, homeless dog, homeless dog. Okay, sir. Okay, sir. तो मैडम हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट उसमें सामने आया क्या? Sir, I told that a loose motion in two cases, nothing is there. Only loose motion. इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अक्षीर को सीधे ह्यूमन यूज के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपने दिया है direct milk we can't give because it can irritate in the mucous membrane and it can do the ulceration also. So that's why this ripened banana, inside the ripened banana, so they have given. In rural practice also, in so many Odisha, the traditional people, they are doing the practice also, sir. तो इसका कोई और यूज भी है अर्कशीर का? सर अर्कशीर का और कुछ यूज सर जो है ना मैंने किया है। स्किन में एक्जिमा में बहुत अच्छा रोल है। हाँ। इंटरनली कोई यूज हुआ? जैसे एक प्रेपरेशन है हमारी आयुर्वेद की, प्रवाल पंचामृत रस, उसमें अर्कशीर की भावना दी जाती है, उसको भावित करके तो हमने इसको कई बार प्रयोग किया, लेकिन अर्कशीर को सीधे पेशेंट को देना वो थोड़ा सा अभी तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, ना हमें कोई एक्सपीरियंस मिला कि कैसे इसको दिया जाए। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस है और हम जानना चाहते हैं कि अर्कशीर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी अलौकिक औषधि है ये अर्कशीर, और इस पे कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है कि ह्यूमन यूज के लिए अर्कशीर अंदर जाके क्या क्या काम करता है। अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू। नहीं सर, मुझे भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ओनली आई हैव शेयर इट। इतना मेरे पास ज्यादा नहीं है कि मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस किया है वो है स्किन डिजीज में ही मैंने दिया है। उसमें हल्दी और ये अर्क खीरा और उसमें मिल्क वो करके पेस्ट करके ही उसको लोकल यूज मैंने किया है। तो मैंने ये अर्क खीरा का डायरेक्ट यूज नहीं किया है सर, कि लेकिन ये जो मतलब मैंने देखा है कि ये जो बनाना जो है कि राइपन बनाना में उसके अंदर उन्होंने ये करके वो सीधा वो चबाते नहीं है, सीधा ही वो लोग ये करते डिगुल्टेशन कर देते हैं, ऐसा ही मैंने देखा है। इसके PubMed पे कुछ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कर्नल ऑफिस का लेटेस्ट जो उन्होंने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पे कुछ एनिमल्स ट्रायल्स किए हैं, एंड दे फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। HCC पे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पे, वो एनिमल ट्रायल्स के तो रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। ह्यूमन यूज में अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ये एक टॉक्सिक ड्रग है और शेड्यूल E1 में यूज होती है, E1 में मेंशन है, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट यूज कभी किया नहीं है। बट मैं यही जानना चाहता था कि अगर ये ह्यूमन यूज ऑलरेडी इसका हो चुका है तो उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो बड़े यूजफुल हो सकते हैं। तो चलो आज फिर भी इसको हम ट्राई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। पवन जी, ओवर टू यू। Thank you sir, thank you very much. Now I hope everything is clear. Anybody in the audience, any dignitary from the audience would like to add in brief anything? Welcome. Pavan ji, could I ask Lakshmi Priya ji, जो हरीश जी का एक सवाल वो स्वर्ण के बारे में, शायद if you have some, आपके पास अगर कुछ हो जी कि क्वालिटी कैसे बनती है स्वर्ण। अनम्यूट, आपका म्यूट चल रहा है जी। जी सर। सर मैं स्वर्ण के बारे, लक्ष्मी जी स्वर्ण के बारे में ये क्वेश्चन था हरीश जी का कि मनशिला डलती है स्वर्ण की प्रिपरेशन, तो मनशिला में आर्सेनिक मिलता है, नंबर 1।
क्या वो आर्सेनिक की बनी हुई भस्म को हम स्वर्ण प्राशन में यूज कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो वो बच्चों में क्या नुकसान देगी कि अच्छी रहेगी? यदि नहीं तो कौन सी भस्म यूज कर सकते हैं? सर मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं सर ज्यादातर मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का हूँ, प्रसूति स्त्री रोग का। तो मैं ज्यादातर सुवर्ण बसंत मालती रस है और बृहदबाद चिंतामणि, ये 2 गोल्ड प्रिपरेशन का मैं यूज करती हूँ। और सुवर्ण बसंत मालती मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी देती हूँ, जहाँ जरूरत है वो देती हूँ। इवन IUGR केस में मैक्सिमम हम लोग देते हैं इसको। और बृहदबाद चिंतामणि जो है ये लास्ट 9th मंथ में हम देते हैं वीकली वंस टू इंड्यूस। और हमारी भी बॉडी में 2 ही जो ऑर्गन्स है, इट कंटेन द गोल्ड, यूट्रस एंड द हार्ट। सो मैंने उसी में देती हूँ। और उसमें सर मुझे आज तक जो कोई कॉम्प्लिकेशंस अभी रिपोर्टिंग नहीं है। तो इसलिए सर मैंने तो सुवर्ण प्राशन जो हमारी कौमारभूत डिपार्टमेंट से हो रहा है, ये तो उसमें से वो लोग सुवर्ण भस्म ये रसास्त्र डिपार्टमेंट से लेते हैं। लेकिन सर मुझे इतना इंक्वायरी नहीं किया है कि कैसे बनाते हैं, क्या है वो। सर थोड़ी इंक्वायरी करके ही मैं हो तो बता सकती हूँ, लेकिन मैंने इतना नहीं ये किया है, अपने डिपार्टमेंट में ज्यादा ये दिया है, ध्यान दिया है। अगर बोलेंगे तो मैं थोड़ा देख के ही बताऊंगी। लेकिन जो भी आपने यूज किया उसमें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मैंने जो किया है किसी का भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, किसी का भी। साउथ में क्या है कि वो लोग ज्यादा मेटालिक प्रिपरेशन कभी गर्भिणी को देते ही नहीं है। और मेरे अंडर में सभी केरला की स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, और उधर बहुत मतलब मॉडर्न वाले धमका के इन लोगों को रखा है कि गायने के ये जो ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में। तो ये जितने को मेरे पास स्टूडेंट आए हैं सभी PG और PhD को मैंने ज्यादातर ही ऑब्स्टेट्रिक टॉपिक ही दिया है थीसिस केस में। और मैंने सुवर्ण वो लोग खुद ही देखा है कि कैसे ये सुवर्ण प्राशन जो है कि इसमें जोगेंद्र रस, और ये जो है कि इवन बातकुलान तक एक एपिलेप्टिक केस जो प्रेगनेंसी केस में हम लोगों ने दिए थे, उसका भी नॉर्मल बेबी हुआ। जब कि मॉडर्न में उनको मना कर दिया था कि आप इसको इंड्यूस कर दीजिए, एबॉर्शन कर दीजिए। तो एक एपिलेप्सी केस को भी दिया था। और दूसरे कि जिसको मतलब हाई BP उसको कंट्रोल में नहीं हो रहा था, उसको लाबेटालल दे के भी उसको हमने जोगेंद्र रस जब से दिया तब से उसका कंट्रोल भी हुआ और उसका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ। तो ये सब देख के ही मुझे आज तक कोई भी ना बेबी ना मदर किसी का भी अभी तक रिपोर्टिंग नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंफॉर्मेशन। मदन सर। पवन जी, एक और सवाल हमारी पिछले, सॉरी वी आर गोइंग अवे फ्रॉम टू स्वर्ण प्राशन के बारे में जी। एक सवाल जो आया कि whether you can give swarna prashan to the adult as to start early in pregnancy from the 3rd month onwards. Usme kuch, so I'm following your comment ki you have given swarna preparations in pregnancy. So the question is, जो गर्भिणी परिचार्य के वो मासामास उसमें अगर वहां पे दे तो is there some advantage कि can you start with the adult and then follow with the बच्चा? उसमें कुछ है जी, कुछ सोच आपकी तरफ से? Yes, sir. In a pregnancy case, when we are see that there is the IUGR baby, or in some cases there is the small for the gestational age, in that cases, and when there is the fetoplacental circulation, there is the arch of the aorta in this case. So in that case, when the USG by the USG report, then we are giving this gold preparation. Mainly, I am prescribing that is the Suvarna Basant Malti Rasa. It is the weekly twice in a day OD with this honey and a ghee we are giving, and till now we have not get any report of the complication, and all the normal delivery or the cesarean delivery, but there is no any reporting of the any deformity in the baby or any complication of the baby or the mother. लक्ष्मी प्रिया जी,
आपने तो इतना काम कर रखा है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहीं है जी थोड़ा सा? Yes, sir. There is the documentation, sir. That is the PG, PhD, all the thesis work अच्छा, has been done. So, PhD थी। but this gold preparation, particular the giving the gold preparation, that I have not been means documented. So it has to be documented, sir. चलो जी, थैंक यू। Exactly, sir. Exactly. Thank you, इसमें sir. एक सवाल और सर जी, दोमा जी है हमारे साथ, उस दोमा जी ने पकड़ा पहले कि घी और मधु हनी की कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे अनइक्वल अमाउंट्स में देनी है ना जी, मिक्स कर? सर हम लोग ऐसे देते हैं, इफ 1 teaspoonful घी देन हाफ टीस्पूनफुल हनी। अच्छा, 1 teaspoon घी, हाफ टीस्पून हनी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आई थिंक लक्ष्मी प्रिया जी, आई हैव पुट हमारी टेलीफोन नंबर वगैरह चैट बॉक्स में है। इफ वी कैन टेक योर कॉन्टैक्ट नंबर, शायद हरीश जी विल आल्सो वांट टू डिस्कस विद यू। और दूसरी चीज जी, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कैसे, थोड़ा सा वो जो केसेस आपके पास है, सेफ यूज ऑफ स्वर्ण भस्म preparations, rest preparations in pregnancy, उसके ऊपर अगर कुछ हो, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा सा। Exactly, sir. I am also interested that I should be documented it because it is giving very. हाँ जी, then we can use it as evidence कि देखो sir, one काम more चल रहा जामनगर में, it is safe use. Exactly, sir. In IUGR cases also we are giving this medicated Khirabasti also. It is giving very good result for the even in 10 days. There is so many publications also, and then animal study. Then we have published these papers that in IUGR cases, that is we are giving this medicated milk as the basti therapy for 10 days, and within this 10 days I also astonished how the weight is increased. It is the 600 grams to even 900 grams also, the maximum we have seen. And even so, two cases, just I told to the student that you give one case, this is the Khirabasti, and another case, don't give the Khirabasti. So in this case also, now this the paper has been just prepared and it will be published. Which baby, which the mother we have given this Khirabasti, in the 2.4 kg baby, and in the 8 month of the pregnancy, then for the 10 days we have given this basti, and we have not given the basti the same the second gravida with the 2.4 kg baby and the IUGR, both the cases. But when the delivery was done, that is whose we have given this basti, it is the 3.2 kg baby. It was delivered by the mother in the primary case, and the mother is not that much also healthy, that much not height. But this which we have not given this basti, that mother was very height and healthy, but the baby was 2.6 kg. Wonderful. Lakshmi Priya ji, you have so much experience, और थोड़ा सा documentation करना जी इसको, क्योंकि उससे yeah, sir, it is documented, sir. It is documented. My Khirabasti all over India and all over institution, they are now using this medicated. Only this Arjuna Satabari Bala. That is 3 drugs only. No any metallic preparation also we are adding. एक last question from my side जी, आपके वो preeclampsia में कुछ रस औषधि, आप do you have some experience? Pre-eclampsia set we have given that is the Bata Kulantak Rasa. अच्छा. Bata Kulantak Rasa I am giving, and along with this Brahmi Rasa. Mandukapanni Brahmi Rasa, and we are giving the Nasya also by the Brahmiswaras. So that case I told that in one epileptic case, when the modern doctor, they told that you have to abort it and induce the abortion. In that case, I have taken the risk, and so many times, sir, you know that in the obstetric cases, it is always risk, always in the threatening, that is if you do, then you will be that is the blame. So there is so many cases, but still then I am very happy that because that mother was she was crying that if she will not conceive, then and then she can be divorced or like that. So then I take the risk, and then by the cesarean section, that is the delivery was in the full term baby, and that the baby and mother both are okay. And I have आप जैसे confidence कैसे ले आए जी students में?
मेरे स्टूडेंट्स सर when they are seeing this case, जामनगर में एडमिशन लेना पड़ेगा सर. नहीं sir when they are see this is the case, and I know that is the Anu MS now, he is in NIA in Jaipur. He was the clinical register, so always he was telling, madam, you are giving this this metallic preparation, and in the south they are not giving. But when he see in the World Ayurveda Congress also, he was presented his paper, and his paper was awarded. लक्ष्मी प्रिया जी हमारे साथ है सुधाकर रेड्डी जी बेंगलुरु से. शायद सर मदन सर जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं इसलिए कि आपका प्रिजम्पशन regarding the questions and the hypothetical approach of question is really remarkable. Madam is here. As you talked about that, can the sonopration type approach be done to the adults, those who are going to, the lady is going to be pregnant? The idea is this, that we can talk about the bij avyav, bij bhag avyav. For the quality improvement of that sperm, it can be done, but that the term we cannot use as a sonoprasan. Exactly. Sonoprasan is applied over the tongue with the help of the honey, so it can be injection. You can go to the, as far as the theme and definition of sonoprasan is concerned, that is to be done over the kids up to 12 years or so, the madam. So sonoprasan will not be there, but it will be called something. Can be. They can. They are also giving sir siddha makardhaja for when the shukra khaya cases. Exactly, that's what I was just listening. That is the approach. That is the approach for making the bij bhag avyav quality. Exactly. That is we doctors give, and you also give. Case, sir, we are giving. I am talking about the sonoprasan will be only chopped out for that we babies. will do on tongue. Thank you. इसमें जी लक्ष्मी प्रिया जी, इसमें I think सुधाकर रेड्डी जी will tell us a little more. साउथ कर्नाटका में क्या चल रहा है इसकी? Exactly. हमारी तरफ से एक सवाल जी, इसकी जो अलग अलग टेक्निक्स है आपके पास, जो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है ना जी थोड़ा सा? जरूर सर, आई विल ट्राई सर. क्योंकि थोड़ा सा जिससे कि हर एक